हम लोगों ने इसलिए कुछ किया है। तो for a few minutes I will start the program, sir. So please, sir, I am for this one. there on time. Now it is up to you to start the program. Yes, sir. Yes, sir. I will start at the scheduled time, sir. And no, okay, sir. Welcome. Sir. Okay, Thank you, sir. Thank you. Now present here a sufficient number of Okay, sir. participants are joined here. So please start the program. Okay, sir. A very good afternoon to respected director, sir, BBDITM, our today's resource person, Professor Dr. A.K. Khare, sir, HODs of all the department and faculty members. On the behalf of BBDITM and IIC, I, Garima Singh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, welcomes you all in today's webinar session on significance of COPO mapping concept and attainment level for NBA accreditation. Today's webinar is organized by Mechanical Engineering Department, BBDITM, in association with IEEE BBDITM Student Branch, Lucknow. Our resource person of today's webinar session is Professor Dr. A.K. Khare, sir. Respected sir, I would like to say thanks for accepting our invitation from your busy schedule. Now, I would like to request Juwayriyyah Fatima, a final student of Mechanical Engineering Department, please give a brief introduction about our today's resource person. Over to you, Juwayriyyah. Thank you. Thank you, ma'am. Professor A.K. Khare, sir. He was born in 1946 and acquired BE honors in 1966, MTech in 1973, PhD in 1985 in mechanical engineering from GEC Jabalpur and IIT Kanpur. He has served as Director of Institute of Engineering and Technology, Lucknow, Pro Vice Chancellor of UP Technical University, Lucknow, Vice Chancellor, IEC University, Badi, Honorable Chancellor or IEC University, Badi, Vice Chancellor, Suresh Gyan Vihar University, Jaipur, Chairman, Central Admission Board of UP State Engineering Admission Test Cell and conducted common entrance examination in the state of UP for 10 years. Chief Project Coordinator for UP State in World Bank Program TEQIP of Government of India. Conducted first online entrance examination in the country, ENAT, as Controller of Examinations in 2007 and 2008. Chairman or member of 30 committees of Government of India. Chairman of Shivalik Educational and Research Foundation, Allahabad. Chairman Board of Governors, Moradabad Institute of Technology, Moradabad. Advisor Technical Education of Department, Government of UP. Chief Advisor, Sharda Group of Institutions, Sharda University, Greater Noida. Vice President of IEC Group of Institutions, guided 25 candidates in MTech and PhD thesis. Published over 100 research papers in international journals of repute, consultancy and research projects of the industry such as HAL, TEL, CO, Scooters India Limited, ALI, MCO, RDSO, C&W Railway Workshop, and CST. Career of over 50 years in planning, development, admissions, counseling, quality assurance, regulation, and facilitation in technical education. His current interests include design and conduction of faculty development programs and faculty training, design and development and management of monitoring and quality assurance modules of higher education, including universities,
Presently, he is serving as an advisor at Quantum University, Roorkee. Thank you. Thank you. Now I would like to invite Professor and Dr. S.S. Chauhan sir, Director BBDITM, to please immerse your few motivational words for us. So thank you, sir. Please Thank come. you, Dr. R.N. Yadav ji, and thank you, Garima Singh. I am very thankful to all of you for organizing this important lecture, and I am very thankful to Dr. A.K. Khare for accepting our invitation in a very short period of time. And I would not like to tell much about Dr. A.K. Khare because he is a very known personality, and because today's agenda is very important to understand that how to plan a COPO mapping and how to calculate the outcome. So this is very important because sometimes faculty may face the difficulty for the calculation of the direct attainment and indirect attainment. So not only this, we should understand that why we are calculating the course outcome and why we are mapping with the POs. All these things let us learn with this lecture. So I request Dr. A.K. Khare to give his presentation. Thank you very much. Hmm. Thank you, sir. Now I would like to, our humble request to Professor Khare sir, ki please deliver the lecture. And obviously we are facing a problem during this COPO mapping. तो मुझे उम्मीद है कि सर इसको काफी ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे. तो प्लीज सर. ये स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. Screen share हो रही है. Yes. Okay. Thank you. Thank you. So, thank you for the brief introduction. In there was a little minor mistake when Dr. S.S. Chauhan indicated that I spared some time from my busy schedule. In fact, I am a free bird now and I have all the time in the world to help, monitor, and mentor my faculty members. That's the role I am doing for the last 16 years precisely, 2005 onwards. Anyway, the topic which I have chosen for today's discussion is outcome-based education. It's a broad topic, holistic topic. Am I audible? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं sir. No, sir, you're audible. So outcome-based education is more broad and holistic topic than the topic which was assigned to me. The topic assigned to me was need and importance of NBA accreditation for engineering programs, the basic concept of COPO mapping, gap identification and their fulfillment, methodology for direct and indirect attainment levels, advancement in teaching learning process. Now in this entire exercise and the topic which was suggested to me for discussion, I have dropped need and importance of NBA because it's a separate area, one. And second thing, I would say that if you chase for perfection in education, if you chase for perfection in education, somewhere on the way you will need excellence. So I strongly believe that NIRF ranking, NBA accreditation, NAC accreditation, the peer reviews, the experts' views, they are all byproducts of quality education. So we have to be quality based and we must chase the perfect quality education. And then in the process, we will gain all these things, NBA accreditation, NIRF, blah, blah, blah. NIRF कल ही आया है, NIRF ranking. Anyway, so
I have slightly changed it and reorganized it. I will not say change. I have reorganized it to suit the steps in my presentation, and I will try to discuss with my faculty members who are so learned faculty the various topics, various points in depth without touching what is NBA accreditation requirement. So we will discuss what are program objectives, what are processes and techniques of teaching learning process, what are process, objectives and levels of learning, and Bloom's taxonomy. What are six levels of Bloom's taxonomy, which is normally known as BL, Bloom's taxonomy level. Then why do we carry examination? What is assessment? What are the roles, purpose, and tools we have for assessing the learners and our students? And then we will discuss what is program outcome. So we started with program objective and then teaching learning process, knowing about the learning levels, processes and objectives, and the examination roles, we will reach program outcome. So we will start from program objective and we will reach program outcome. We'll discuss this point in detail a little later. Then second phase discusses the design of outcome-based programs or outcome-based education or outcome-based learning as it is commonly known. And in the process, we will talk about the basic concepts of COPO mapping, course outcome, program outcome mapping. And then we will also see at the end the method of computation of direct and indirect attainment levels. Okay. So I have only reorganized the topics. Otherwise, the topic which I'm going to discuss is by and large the same. Now, I want to assure my audience that this outcome-based education or outcome-based learning, this is not a new concept. 5,000 years back, it was existing in Gurukul system. And when our Lord Rama with his prince friends, brothers, took the undergone the education and took the training, then there was a certain objective, and the objective was translated to outcome. So entire learning had objective at that time, and entire learning had outcome also. With a very simple example, I'll try to explain. For example, he learned the use of spears, bows, and arrows. बाण चलाना सीखा, भाला चलाना सीखा, गदा चलाना सीखा. Now, what was the purpose? What was the objective? क्या रामचंद्र जी को एनबीए कराना था क्या रामचंद्र जी को एनआईआरएफ जाना था कि उनको नेट में जाना था? None of them. The basic objective was not to conquer other kingdoms. दूसरे राज्यों को हड़पने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी उनकी. The basic outcome was to protect our those days saints, Rishi Muni, while they were doing yagna from the disturbances from दानवास और डेमन्स. तो जो दानव लोग थे वो आकर के उसको डिस्टर्ब किया करते थे यज्ञ को. तो दानवों को डराना और ड्रावणों को भगाना, जिससे कि वो ऋषि मुनि और जो उस जमाने के सेंट थे वो प्रॉपरली यज्ञ कर सकें. दैट वाज द आउटकम ऑफ लर्निंग.
So he had not learned how to use bows and arrows, spears and gada for winning the other kingdoms. His same the program objective was to protect, facilitate, help the rishis and munis to perform their yajna uninterruptedly. I think you are getting my point. So in those days also we had POs and COs. So the PO was program objective, the training objective was to permit the disciples and learners to help their gurus and rishis and munis to perform the yagna. And in the process, they were not permitted to kill the danamas until and unless it was essentially required. जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक दानवों को मारने की परमिशन नहीं थी. So therefore they were given lessons in, say, culture, the other trainings also. There were several courses which they had undergone, starting within the morning session, going in the village and beg for alms, भीख मांगने के लिए जाएं, to earn their own livelihood. चाहे राजा के बेटे हो चाहे किसी के बेटे हो, but you should learn to earn your livelihood. So therefore I have written down that in ancient India, the students used to live in Gurukul till their education was completed. Not for one day, 1 week, or 1 year, 10 to 5, but maybe 12 years, maybe 10 years, maybe 15 years, and treated Guru and Guru Mata as their parents. Gurukuls were known by the name of Guru. It was not known by Babu Banarsi Das or not known as AKTU, Shri Abul Kalam ji. It was known by the name of the gurus who were teaching in the Gurukul. विश्वामित्र जी का गुरुकुल है, वशिष्ठ जी का गुरुकुल है. The learning was holistic. Several courses were there. उनको economics भी पढ़ाई जाती थी, राज्य शिक्षा दी जाती थी, हम्बल रहने की शिक्षा दी जाती थी. सुबह उठ करके अपना खुद खाना बाहर से मांग के लाओ उसकी शिक्षा दी जाती थी. It was creative for a long duration under the watchful eyes of Guru. So Guru और Guru Mata उनको देखते रहते थे, and the entire education was holistic and creative. And trying unpredictable, innovative solutions was very common. और इनोवेटिव सॉल्यूशन ट्राई करना ये बड़ी कॉमन चीज थी, कोई नई चीज नहीं है. उस जमाने में इनोवेशन बेहिसाब हुआ करते थे. इन द मॉर्निंग इंसिडेंटली I got an invitation at about 9 o'clock to participate in an international conference in February 2022 on sustainable new innovations in education. The catchword in the entire topic is sustainable. So the innovation which you are trying in education has got to be sustainable. New educations, futuristic educations, futuristic innovations. So innovations, we are trying to reinvent the wheel. 5000 साल पहले हमारे गुरुकुल में ये innovation बड़ा common चीज थी. I'll give you one simple example again to explain how the gurus used to innovate. I'll give the example of Guru Drona. When the princess completed their training in archery, तो उनका एग्जामिनेशन हुआ, असेसमेंट हुआ, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ.
So end semester examination mein Guru Drone said that he kept a toy bird on the top of the tree and asked all of his students one by one कि क्या दिख रहा है तुमको, क्या क्या दिख रहा है. Then some said bird देख रहे हैं, I'm able to see tree, आसपास देख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, और भी चीजें दिख रही हैं. Except Arjuna, who said, I'm only able to see the eye of the bird, maybe sitting on the tree. The Drona then said that shoot the arrow, and the arrow hit it on the bird's eye. So this innovative way of examination and assessment was very popular in those good old days. We are so proud of conducting online classes today. Yes or no? We are very proud of conducting online classes for the last 1.5 years because of pandemic, and we have devised several methods for online learning and online teaching. But do you know who was the earlier online student in our ancient India? Now he was Eklavya. Eklavya somehow, because the reasons beyond his control was not registered in the Gurukula of Guru Drona, and therefore he established the statue of Guru Drona and silently watched Guru Drona what instructions he is giving, and thereby he learnt. So I'll say he was among one of the few early online learners, and we should not take pride in delivering and making our students to learn. The teaching learning process and the assessment process in Gurukul were both innovative and delivered in a learner centric mode. The student centric mode, the mode so that the students are able to learn them. If the students are not able to learn through one explanation, the teacher used to give alternate explanation. Often the examination was conducted in a creative mode. The system was very flexible. There was no 4-year duration for graduation degree. If the guru was not satisfied, some may take 5 years, some may take 6 years. The system was flexible. It depended upon what suits your taste. So those courses you take, if you like spears, अगर आपको भाला पसंद है तो वो ले लीजिए. अगर आपको धनुष बाण पसंद है, bow and arrow, तो वो ले लीजिए. Different courses were offered and the system was flexible. The student group was very small and all the learners were highly motivated learners, unlike learners of today. I'm really sorry to say that today we are fighting to motivate our learners first, and then we are trying to give them some type of training. So they are by and large demotivated. The learning process was by and large developed by evolution and varied from student to student. Every student had a different learning process, and the guru evolved this learning process. There was no limitation on the time for graduation and training. The technology, high level technology, was not available, and therefore the low level technology was used in those days. The physical things were available. The personal face-to-face interaction was the rule of the game. The learning objective of the programs were totally different. And to tell you the fact, the COPO mapping was followed, faithfully followed. The program outcome was decided, and what courses the student should take
to achieve those program outcomes were guided by the gurus, and thus the courses could be different for different students. The active participation of students, they actively participated in every activity, ensured through awakening curiosity. So the first thing was the curiosity was awakened in them, and trying unpredictable, innovative solutions was very common. Now I have a small story to tell you, maybe for 5 minutes. I have all the time talked about innovation. And now here is a story which says that a question in physics degree examination at University of Copenhagen was asked from a student, describe how to determine the height of a skyscraper. एक ऊंची बिल्डिंग है, there is a tall building. How to determine the height of the skyscraper with the help of a barometer. Now this was the Viva question, and the student replied that you tie a long piece of string to the neck of the barometer, then lower down the barometer from the roof of the skyscraper to the ground. तो रस्सी से बैरोमीटर को जमीन पर लटका दो. The length of the string plus the length of the barometer will be equal to the height of the building. Now, if you are a physics teacher and somebody gives you this reply, what will you do? So naturally, this highly original answer so incensed the examiner, then the student was failed. Fail कर दिया student को, फौरन fail कर दिया. The student appealed in the university on the grounds that his answer was indisputably correct, and the university appointed an independent arbiter to decide the case. एक नए प्रोफेसर को केस दे दिया कि अब आप डिसाइड करिए कि लड़के ने जो जवाब दिया था ठीक है या नहीं ठीक है. The arbiter judged the answer was indeed correct. आंसर सही था क्योंकि उसने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब सही था. बैरोमीटर का भी उसने यूज किया और एक धागा से बांध करके लटका दिया. So the answer was similar to one that maybe 15-20 years back I asked one of my students in the Viva, what do you understand from entropy? तो लड़के से मैंने पूछा वाइवा में, what do you understand from entropy? तो उसने आंसर दिया, sir, I don't understand and know anything about entropy. अब मेरी समझ में नहीं आई ये सही जवाब है गलत जवाब है, क्योंकि हमने सवाल पूछा था कि तुम्हें इंट्रोपी के बारे में क्या मालूम. उसने कहा कुछ नहीं मालूम. So therefore the answer was correct, but did not display any noticeable knowledge of the subject. To resolve the problem, it was decided to call the student and to allow him 6 minutes. 6 minute time देंगे और फिर से कहेंगे वही सवाल का जवाब दो. In 6 minutes, he had to provide the verbal answer that showed at least a minimum familiarity with the basic principles of physics. For 5 minutes, the student sat in silence. आराम से बैठा रहा, गप्पे मारता रहा. Forehead creased in thought. Forehead में माथे में कई सिकुड़न आ गई थी, सोचता रहा. The arbiter reminded him that the time was running out. To which the student replied that he had several extremely relevant answers. एक relevant answer तो उसने पहले दिया था और अभी भी उसके पास several extremely relevant answers हैं, but could not make up his mind which one to use. On being advised to hurry up, the student replied, firstly, you could take the barometer up to the roof of a skyscraper, drop it over the edge and measure the time. Barometer को छत पे ले जाओ, छोड़ दो, time measure कर लो. Then the height of the building is given by the formula h is equal to half gt square. सबको मालूम है that
S is equal to ut plus half ft square. So height will be equal to half gt square. But bad luck on barometer. Barometer तो पर पक्का टूट जाएगा. Then he said alternatively, or if the sun is shining, you could measure the height of the barometer, then set it on the end of the measure and measure the length of its shadow. तो बैरोमीटर को खड़ा करो और उसको शेडो भी नाप लो. तो बैरोमीटर नाप लिया और शेडो नाप ली. Then you measure the length of the skyscraper shadow और बिल्डिंग की शेडो नापो. And thereafter it's a simple matter of proportional arithmetics of trigonometry to find out the height of the skyscraper. Another answer. Then he said, but you wanted a highly scientific answer about it, then you could tie a short piece of string to the barometer and swing it like a pendulum, first at the ground and then at the top of the roof. The height of the skyscraper can be worked out by the difference in the gravitational restoring force by the formula T is equal to 2 pi under root L by G. Or if the skyscraper has an outside emergency staircase, बाहर की तरफ कोई staircase है ना, गोल गोल होती हैं, it would be easier to walk it up and mark out the height of the skyscraper in barometer length. Suppose the barometer is half a meter long, तो half meter को बराबर measure करते जाओ और छत तक पहुंच जाओ. So that is how you can measure the height of the barometer. But if you merely wanted to be boring and orthodox, पर आपको पुराना और orthodox जवाब चाहिए, then you could use the barometer to use the air pressure on the roof of the skyscraper and on the ground and convert the difference in millibars into meters to give the height of the building. और ये वो आंसर था जो फिजिक्स के प्रोफेसर जानना चाहते थे, क्योंकि एयर प्रेशर रूफ पे मेजर करो, एयर प्रेशर ग्राउंड में मेजर करो और एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है मिलीबार्स में, उससे हाइट निकल आएगी. बट सिंस वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग exhorted to exercise independence of mind and apply scientific methods, undoubtedly the best way could be to knock the door of the janitor, जो caretaker उसके दरवाजे में खड़काओ और पूछो कि if you like a nice new barometer, I will give you this one if you tell me the height of the skyscraper. So I have given you 5 or 6 or 7 answers which was given by that student to the arbiter and the examiner. I don't know whether they were satisfied or not, but the student was Niels Bohr, the only Dane who won the Nobel Prize for Physics. He was a Danish physicist, won the Nobel Prize and was attempted to fail in physics, in which he won the Nobel Prize later. तो ये तो हालत हम लोगों की है, हमारे टीचर्स की है. We don't like innovative answers. Anyway, सर चौहान साहब, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए तो मैं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, we all are enjoying sir. So I have selected some school days question when we were in second standard or third standard. तो इस तरह के सवाल पूछा करते थे. A man, a tiger, a goat, and a bundle of grass have to cross a river using a boat which can accommodate any two of them. Everybody knew how to row the boat. किसको boat खेने का तरीका सबको मालूम था. At any point of time, tiger and goat and grass cannot be left alone either on the boat or on the shore. इनको आप साथ साथ नहीं छोड़ सकते थे. So how to cross the river in least attempts? अब बड़ा इनोवेटिव सवाल था. लड़के सर खुजाया करते थे और फिर अल्टीमेटली जवाब भी दे दिया करते थे. We were not that fool in those days also. Then थोड़ा बड़े हुए तो सवाल का रूप भी बदल गया. Second question, school days question, innovative question.
टीचर नहीं पूछता था, हम लोग आपस में पूछा करते थे. Few birds are sitting on two trees. A bird from tree 1 says to birds of tree 2, if 10 birds fly from your tree to my tree, we shall have equal number of birds. The bird from tree 2 says, if 10 birds fly from your tree to my tree, my number will be 5 times your number. How many birds are there in each tree? उस समय तक हम लोगों ने एल्जेब्रा नहीं सीखी थी. मे बी फोर्थ स्टैंडर्ड में रहे होंगे या फिफ्थ में रहे होंगे, एल्जेब्रा नहीं सीखी थी. Therefore, this was a very difficult question in those days, innovative question. Somehow we solved this also. फिर थोड़े बड़े हुए तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आए. Two men were walking together. Somebody asked them, how are you related? One of those men replied, इसकी बुआ मेरी बुआ को बुआ कहती है. Then we used to ask our friends, how are they related? So logic में हम लोगों ने इनोवेटिव सवाल ढूंढने शुरू कर दिए. उसके बाद और बड़े हुए, मे बी फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ गए. Then we used to ask questions of the type 2 plus 2, 3 is equal to what? Now it's a simple and direct question, direct summation. Then we varied the manner in which we asked the question that what should be added to 2 to make it 5. So 2 plus question mark is equal to 5. This is little moderate, little indirect, because we have to subtract 2 from 5 and get the answer 3. And then the degree of difficulty of the same question was improved. 2 plus question mark multiplied by 5 is equal to the smallest 3-digit perfect square. So what is the value of square? I wonder कि अभी भी बहुत से जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इस तीसरे पार्ट में थोड़ा सर्क हो जा रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू रखे हैं. आई विल टेल यू द स्मॉलेस्ट 3-digit परफेक्ट स्क्वायर इज 100. तो 100 पाने के लिए 5 में 20 से गुणा करो. So therefore question mark has to be 18. So these questions are not very difficult. Our level, the questions are simple. अब हम लोग थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इनोवेटिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. माय ऑब्जेक्ट इज टू मोटिवेट यू टू आस्क सेम क्वेश्चन इन एन डिफरेंट वे, सिंपल डायरेक्ट वे, मॉडरेट इनडायरेक्ट वे एंड डिफिकल्ट इनोवेटिव वे. द क्वेश्चन इज ए फॉल्टी बैलेंस. तराजू देखा है आपने? मुझे नहीं मालूम आपने देखा नहीं देखा, पर हमारे जमाने में हुआ करता था. Simple balance beam with 2 pans. A faulty balance beam, 30 centimeter long balance beam has a fulcrum C 14.5 centimeter from the end A and naturally 15.5 centimeter from end B. तो जो फलक्रम है वो बीच में नहीं है, एक सिरे से 14.5 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे से 15.5 सेंटीमीटर है. A person gives wheat by putting 10 kg weight on the left pan and wheat on the right pan B. Then he interchanges them and puts 10 kg weight on the right pan and wheat on the left pan. What is the total quantity of wheat which he has weighed? एक पल्ले पे 10 किलो रखा और वीट तोला, दूसरे पे 10 किलो रखा और वीट तोला. और मैं आपको बता दूं ये आंसर इज नो दैट इफ यू टेक बैलेंस बीम का एक पोर्शन एक्स ले लो और दूसरा पोर्शन वाई ले लो, तो सिंपल फॉर्मूला है मैकेनिक्स का. क्वेश्चन नंबर 5 की, but it is required to weigh 15 kg of wheat using this faulty beam. इस faulty beam को जिसकी एक सिरा
14.5 सेंटीमीटर है फलक्रम से, और दूसरा सिरा 15.5 सेंटीमीटर है, हमको 15 किलो गेहूं तोलना है, तो एक्सप्लेन करें स्टेप्स कि कैसे तोलेंगे। नाउ आई बेट दिस इज ए टेक होम एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको घर में बैठ के सोचिएगा तब आपको आंसर मिलेगा। सो देन आई हैव another question. I'll show you how the same question will have different degrees of difficulty. तो देखिए ये फिगर क्या है, ये फिगर शो करता है एक आदमी है, the weight of the man is W, वो एक पुली के ऊपर एक रस्सी से एक बकेट खींच रहा है, the weight of the bucket and water is P, he is pulling the bucket from the well and he is standing on the weighing machine. So weighing machine पे आदमी खड़ा है, एक पुली की रस्सी की सहायता से एक बकेट खींच रहा है, जो पानी का वजन है, बकेट का वजन है P है, आदमी का वजन P है, W है. So if the weight of the man is 600 Newton, load being lifted is P Newton, then first manner in which I can ask the question is, the maximum load that can be lifted is dash dash dash, or you will be knowing it that if the man weighs 600 Newton, he cannot pull load more than 600 Newton. So maximum load is 600 Newton. Then what load should be lifted so that the weighing machine reads 150 Newton? तो कितना लोड वो लिफ्ट करे कि वेइंग मशीन 150 न्यूटन कर ले, ये भी सिंपल सब्सट्रैक्शन है. सो इट इज 600 माइनस 150 इज इक्वल टू 450. लेकिन अब हायर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बना लिया सवाल, हाउ कैन ही लिफ्ट ए लोड ऑफ 700 न्यूटन? 700 न्यूटन का लोड लिफ्ट करना है. अगर P की वैल्यू 700 है, W इज इक्वल टू 600 है, तो वो आदमी कूद जाएगा उसमें, एंड ही विल ड्राउन इनटू द वेल. इसके बाद एक और सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है. हम सब ने लट्टू नचाया होगा, टॉप स्पिन किया होगा व्हेन आवर स्कूल डेज. ए टॉप स्पिनिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप है, वर्टिकल एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, स्लाइटली डिस्प्ले छू देते हैं उसको एक सिरे से. नाउ इट मेक्स एन इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल एक्सिस, और इसकी जो एक्सिस है वो इंक्लाइन हो जाती है और चारों तरफ घूमने लगता है. और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट गायरोस्कोप पढ़ते हैं इससे. Then the top starts revolving about the vertical axis in counterclockwise direction, clockwise direction, any direction which suits the top, clockwise or counterclockwise, or depends upon the direction of the spin of the top. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, आप क्योंकि सभी मैकेनिकल के हैं इसलिए आई डेयर टू पोज दिस प्रॉब्लम बिफोर यू. थोड़ा सोचिएगा, समझ में आ जाएगा. अब थोड़ा सा और एक डिफिकल्ट सवाल मैंने लिया है. द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन and is revolving also around the sun in counterclockwise direction if seen from north to south. अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम देखें पृथ्वी को तो वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और काउंटर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है. Now my question is, suppose both the motions go clockwise, दोनों clockwise हो जाए, so it starts rotating clockwise and it starts revolving clockwise. तो एक बच्चा कहता है कि the pattern of sunrise and sunset will change, और दूसरा बच्चा B कहता है the pattern of time zones will also change. Now my question is, who is right? Only A, only B, both A and B, and neither A nor B. और इसके बाद इसी क्वेश्चन को, क्योंकि आप सब मैकेनिकल के प्रोफेसर हैं और विद्वान लोग हैं, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को
and I have found this last question, innovative question, problem 10. The earth is rotating about its inclined axis. याद करो, अर्थ की एक्सिस 14.5 डिग्री इंक्लाइंड है और वो इंक्लाइंड एक्सिस पे रोटेट कर रही है. And it is also rotating, revolving around the sun. जो plane of the revolution है उसके perpendicular axis नहीं है, axis inclined है अर्थ की 14.5 डिग्री. The situation seems similar to a rotating top, which also rotates about inclined axis and revolves about the vertical axis. तो मेरा सवाल ये है कि do we have gyroscopic effect on earth also? अगर मान लो अर्थ का हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करें तो क्या इसमें गायरोस्कोपिक इफेक्ट लग रहा है? आई लीव दिस क्वेश्चन अप टू यू टू डिस्कस. So what we have discussed, Shahan, I'm really sorry, I'm taking little extra time. So I'll now hurry up. The generic objectives of education are development of wisdom, one, then inculcate the eagerness among the students to accept the challenge of new problem, two, then earn a livelihood and sustain a family in future after graduation. जब आप पास हो जाएं, बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, पीएचडी कर लें, then you should be able to learn your livelihood from the knowledge you have gained from whatever you have learned in the schools and university and college, and you should be able to sustain a family. You should serve the society, industry, community. And last but not the least, very important is you should become a very good human being. You should respect human values. Now, education process to me has got 4 steps. The first step is we have education of imparting education, sorry, objectives of imparting education. एजुकेशन देने का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो एजुकेशन देने का ऑब्जेक्टिव क्या ये है कि आप डिग्री ले लो? नहीं, डिग्री लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है. डिग्री इज अ बाई प्रोडक्ट. ये जो ऊपर मैंने बताया इसमें डिग्री कहीं वर्ड नहीं है. डिग्री अवार्ड हो गई, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, कहीं नहीं है. सो डिग्री इज अ बाई प्रोडक्ट. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग एजुकेशन has to be decided beforehand. इसके पहले कि आप प्रोग्राम तय करें, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम डिजाइन करें, you should know what are the objectives of a बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम. उसको कहते हैं प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स. फिर उसके बाद प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने के लिए कोर्सेज निकालिए. कितने कोर्सेज होंगे? मान लीजिए 4 साल का प्रोग्राम है आपका, 1 साल में आपके 8 कोर्सेज हैं तो 40 कोर्सेज हो गए. ओके, सो 40 कोर्सेज यू विल डिलीवर टू देम. देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होगा? ऑल कोर्सेज विल नॉट बी ऑफ द सेम टाइप. कुछ लैब कोर्स होंगे, कुछ थ्योरी होंगे, कुछ सेमिनार होंगे, कुछ प्रोजेक्ट होंगे, कुछ जीडी होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. तो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है. देन थर्ड पॉइंट इज वी एसेस द डेप्थ ऑफ लर्निंग. जब हमने कोर्स डिलीवर किया तो स्टूडेंट की लर्निंग की डेप्थ कितनी है, what is the level of their learning on Bloom's technology norms, ये हम स्टडी करते हैं. एंड देन फाइनली वी फाइंड आउट कि हमारे जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, आउट of the education process. The learning process starts with motivation. The students become curious, they are very eager to learn, and unless and until this eagerness and curiosity is inculcated to the students, you cannot make them learn. जैसे
जब हम स्कूल में पढ़ते थे 7th और 8th में, तो पैदल घर आया करते थे, रास्ते में एक मदारी मिलता था, वो डुगडुगी बजाता था और एक टोकरी को उलट के रख देता था। वो कहता था कि आफ्टर आई डिलीवर माई प्रेजेंटेशन एंड माई टॉक, इस टोकरी के नीचे से कबूतर निकलेगा। सो a lot of curiosity was developed among all us students. हम सब खड़े हो जाते थे, देखा करते थे कबूतर कब निकलेगा। तो ये कबूतर निकालने की क्यूरियोसिटी आप डेवलप करना सीखें। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड इज एप्रीहेंशन। So what is learning material you give? The student apprehends that learning material from his own perception. The third is acquisition of knowledge and information. So he correlates the information and knowledge from the earlier known facts. So he has got certain knowledge, certain level of knowledge. He increases that level of knowledge and correlates it with it. Then he retains all this information and knowledge and stores it back. ये जो हैं, they are higher levels. He recalls and use it for new situations and new applications. Then putting strategies into practice, application of knowledge. जो कुछ आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन क्या है? From the last application of knowledge, and suppose you failed, so you must learn from your failure and you must learn from the result of the previous attempts. So this permits us to move to the next objectives. There are 7 objectives of learning. Same thing grouped in different manner. The first objective is reading, listening and understanding. It's the low level objective, and he understands the meaning of what he reads. आप मुझे सर्जरी की किताब दे दें तो मुझे सर्जरी की किताब में आराम से पढ़ लूंगा, because I know English, I know I can read the surgery book, but I cannot understand it. उसके लाइन के बीच में मतलब क्या है ये समझ में नहीं आएगा. So then second level is retention and recall. The third is apply and estimate. So you can then read between the lines what is not written in the book, and then you can make use of that information for the later on application to the new problems. Then fourth is reasoning. You should be able to reason out logically in a sequential manner on the topic which you have learned. And the higher order objectives are analysis, ideation, and application, synthesis. So analysis is disintegration of the information. You learn why it is so. So if you have a small son or daughter or brother or sister, on his or her birthday, you purchase a 500 rupees toy and give it to the child. The child plays with the toy joyfully for maybe 2 days, 3 days, 4 days, then he breaks it open. तोड़ देता है, breaks it open to find out why the aeroplane is flying, why the bus is running. So he questions why it is so. He tries to analyze the functions done by the toy. और आप उसको 2 चपाते लगाते हैं और बोलते हैं कि तोड़ दिया, 500 रुपए की चीज है, इसकी कीमत नहीं समझते हो. So the children are highly analytical, but as we grow, the analysis concept, analytical mind
is gradually hardened down and we lose this objective. Then ideation is imagination, analogy, generating ideas. This is very important if you want to use the information and knowledge in the application domain. And last one is self-learning, which we also sometimes call as problem solving capabilities. Now, the same thing Bloom's grouped in 6 groups. They are called 6 levels of Bloom's technology. We will call this as BL. तो BL कहलाता है Bloom's level. They are 6 BL. BL1, BL2 up to BL6. So BL1 and 2 are knowledge and comprehension. Knowledge means remember the previous learned material. It is a low level learning. The different terms which are required to test the knowledge are define, describe, identify, label, list, match, etc. etc. यही तो हम करते हैं. We give the questions which start with these words. So this is low level testing. The second is comprehension, the ability to grasp the entire meaning of the learning material and also what is not written in the text. So the terms which are used to define the comprehension are defend, distinguish, estimate, explain, extend, etc. etc. Then third and fourth are BL3 is application and BL4 is analysis. So application is characterized by change, compute, demonstrate, discover, modify, operate, and analysis is basically differentiation. In mathematics, we carry out differentiation. Differentiation means breaking the term into parts, into pieces. So the terms which are used for analysis include breakdown, diagram, differentiate, discriminate, identify, illustrate, outline, point out, relate, select, separate, and subdivide. And the last 2 BL levels are synthesis and evaluation. Now, these 2 BL levels are higher order levels. Synthesis is integration. So you know the knowledge in bits and pieces, you integrate it and use it to for a developing a new concept. So this is called research. So research is carried out only by synthesis or integration. Finally, the evaluation, the ability to judge the value of the compiled material for a given purpose. And the terms which we generally use for evaluation purposes appraise, compare, conclude, contrast, criticize, discriminate, explain, justify, interpret, etc. etc. Now we are ready to step into teaching learning process. अब आप कहोगे टीचिंग लर्निंग क्या होता है, इतने साल से करते आ रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. So let us see what is teaching learning process. So teaching is too complex and too important a profession to let people do it with no training or experience. तो इसलिए टीचिंग बगैर ट्रेनिंग और बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर हैंड होल्डिंग के आप नहीं कर सकते. आपको कोई ना कोई सीनियर आदमी सिखाए, आप खुद भी सीखो और किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करो, देन यू विल बी एबल टू become a good teacher fast. So I have included faculty development programs, hand holding, facilitation by senior faculty members, group learning. तो ये सब एक्टिविटीज हैं जो कभी आगे अगर चौहान साहब परमिट करेंगे एफडीपी के लिए
So I'll tell you what are these various activities. So I normally say teachers are made, they are not born. You are not born teacher. Either you have made yourself as a great teacher, or somebody else has hand-holded you and facilitated you to become a good teacher. तो टीचर तो रॉ मिट्टी की तरह होता है. आपको कुम्हार चाहिए होता है एक बर्तन बनाने के लिए जिससे कि अच्छा घड़ा बन सके. Teaching is all about transmission of old knowledge, one, discovery of new knowledge, two, and development of wisdom. Wisdom means generation of knowledge, understanding of knowledge, and application of knowledge. In the use of knowledge, we need to motivate these students with enthusiasm for learning. Student अब लर्निंग करने को तैयार नहीं है. बहुत से बच्चे थे, मैं जब आईसी में था तब डांटा करता था कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है. पेरेंट्स को बुलाता था, उनकी क्लास लिया करता था, तो पेरेंट्स कहते थे कि सर आप चिंता ना करो, बच्चे को बीटेक कर लेने दो, तो फिर इसके बाद इसको इतने लाख रुपए मिल जाएंगे डाउरी में कि इसको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है. So the program objective was totally different, to increase the dowry in the matrimonial market. तो जो अगर वो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है तो कहाँ से जो लर्नर है वो इंथुजियाज्म कहाँ से आएगा. Then habits of self learning motivated students. Self learning is the catch line. The excellent teachers, they motivate you for the self-learning and the eagerness to accept the challenges for new problems. Now, it is better to include less material and treat it well. ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्स में आप पूरा का पूरा जितना आपने लेक्चर में तैयार किया है वो पूरा लड़कों को पढ़ाओ. थोड़ा पढ़ाओ लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाओ. About 5% of the allotted class time should be reserved for testing these students through probing questions. देखिए आपने भी देखा होगा कि शुरू में मैंने 10 क्वेश्चन प्रेजेंट किए, इनोवेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10. ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हमको वाकई में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 की लर्निंग की नॉलेज है कि नहीं है. तो हमने देखा कि हमको तो टाइम लगेगा उसको रिवाइज करने में. These all questions are probing questions, innovative questions. ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछो. हम आपको बताएंगे आगे चल के कि how to design your probing questions. Take a quiz in the beginning to cover the prerequisite. जो कुछ पढ़ा है बच्चे ने, या अगर आप एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं तो प्लेनर स्ट्रेसेस के ऊपर एक क्विज ले लीजिए. देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पूरी स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ यू हैव प्रीवियसली टॉट ए कोर्स, आई एम कॉशनिंग द टीचर, वार्निंग द टीचर कि अगर आपने कोर्स पहले पढ़ाया है देन क्रिटिसाइज अर्लियर प्रेजेंटेशन. तो जो तुम्हारा पुराना प्रेजेंटेशन था उसको क्रिटिसाइज करो कि आपका पुराना प्रेजेंटेशन से इस वाला प्रेजेंटेशन बेटर हुआ कि नहीं हुआ. जो पहली बार आपने प्रेजेंटेशन दिया था लास्ट ईयर 2020 में, तो उसमें लड़कों ने कितने सवाल पूछे थे, समझ में आया था कि नहीं आया था, और अब की वही लेक्चर आपने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया. Improve your presentation. Third point is award marks on a 10-point scale to your own lecture. Don't show it to anybody else, but very faithfully award marks कि आपने कितने नंबर आप अपने को अवार्ड करेंगे. 10 में से 8 देंगे, 7 देंगे, 7.5 देंगे, 6 देंगे, क्या कितने नंबर देंगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है. पर कहीं कोने में डायरी में लिख लो कि आज के लेक्चर में भैया मैं अपने को 6 मार्क्स देता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूंगा. नोट डाउन गुड क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स आस्क्ड. लड़कों ने जो सवाल अच्छे पूछे थे, अच्छे सवाल जरूर पूछते हैं लड़के, इंटरेस्टिंग सवाल पूछा करते हैं लड़के.
मेरे साथ एक बार नहीं 10 बार हुआ है कि लड़कों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, and they made me to consult the books and my notes and the library n number of times to find out the answer to those questions. तो जो अच्छे अच्छे सवाल लड़के पूछते हैं उसको अप्रिशिएट करो, लड़कों को डांट के नहीं बैठा लो गधे कहीं के, ये भी नहीं आता, अप्रिशिएट करो. और लास्ट पॉइंट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय आईज, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इन द डिस्कशन इन द क्लास. तो क्या डिस्कशन से तुमने सीखा? लड़का तो बहुत कुछ सीख रहा हो नहीं सीख रहा है, पर आपने अगर पूरे साल कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ाया नहीं. प्लीज बिलीव मी व्हेन आई से सो, आई मीन इट. और लास्ट पॉइंट है, द एम ऑफ टीचिंग इज नॉट टू कवर द सिलेबस बट टू अनकवर द पार्ट ऑफ इट, and therefore the teaching learning process involves planning the provocative questions, anticipating the queries. Then you don't be very quick in the framing the answer of the question while the student himself is trying to answer that question. कि अगर आपने सवाल पूछा है कि what do you understand from entropy, तो जवाब नहीं दो फौरन, उसको लड़के को आंसर देने का अटेम्प्ट करने दो. So you should not be very quick in answering the question. You must interest yourself in your students as much as in the subject material. अपने स्टूडेंट्स में और सब्जेक्ट मटेरियल में दोनों में आपको इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए. और ये मैं COPO पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. इफ योर क्लास इज हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 60 students, then you should be able to grade those 60 students from 1 to 60. बेस्ट स्टूडेंट कौन है, नेक्स्ट बेस्ट कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है. अच्छा इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 10 के उसमें क्लब में आप कर लीजिए. 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, कौन कौन से लड़के हैं. एंड अगर ये आप नहीं कर सकते, then I'm really sorry. You need to improve your capabilities of knowing your students. You are not knowing your audience. We are probably in the broad middle category of such faculty members who have the potential of becoming excellent teachers. हमें से हर एक आदमी excellent teachers हो सकता है, but may take years of self learning. अगर लेकिन खुद improve करेंगे तो सालों लग जाएंगे और हम ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे. वी नेवर अटेंड फैकल्टी डेवलपमेंट. मैनेजमेंट परमिट नहीं करता है FDB के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये फ्री में अपनी ये इम्प्रूव कर रहा है क्वालिफिकेशन और फ्री में स्किल्स इम्प्रूव कर रहा है. सीनियर फैकल्टी कभी हैंड होल्डिंग करती नहीं है, बिकॉज यू दे ट्रीट यू एज योर कंपटीटर, एंड देयरफॉर वी आर इन द broad middle category of such faculty members who can be excellent teachers provided कोई हमको nurture करने को तैयार हो. So now we will talk about the teaching learning techniques. There are say 11 techniques by which we teach. The first is expository. हम expose कर देते हैं, figure दिखा देते हैं. We take the students in the guided tour and show them the boiler. देखो बच्चों ये boiler है सामने. So this exposition of the student, हम ये इनको दिखाते हैं कि what is a dam, what is a boiler, what is a locomotive. बच्चा सीख जाता, अच्छा ये boiler है, ये वो है. जैसे जब मैं टूर लेकर के एक बार गया था तो मैंने बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर बच्चों को दिखाया, तो वो बॉयलर करीब 5 मंजिल इमारत के बराबर था. उसके ऊपर जब टॉप पे पहुंचे तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा वेरी इनोसेंट क्वेश्चन कि सर इस पूरी बिल्डिंग में ये बॉयलर कौन सा है. दे हैव नेवर सीन ए बॉयलर इन देयर क्लास. हम तो मॉडल दिखाते थे उनको, तो उनको आइडिया नहीं था कि बॉयलर 5 मंजिल मकान के बराबर हो सकता है. सो
You expose the students to the real thing and they learn. Now, I have taken an example of cat and dog. Now, once upon a time, one of my teachers, कितने साल पहले हुआ होगा, maybe about 50 years back, my teacher asked me in the school a very innocent question: what is the difference between a buffalo and a cow? एक गाय और एक भैंस के बीच में क्या अंतर होता है? The entire class said, no sir, cow is white and buffalo is black. He said, no, cow is also black. फिर कुछ लोगों ने कहा कि गाय के सींग मुड़े होते हैं, बफेलो के नहीं मुड़े होते हैं. All types of arguments they said, but the correct definition of differentiation between the buffalo and cow nobody knew. कि जो गाय के गले में खाल लटकती रहती है और भैंस के गले में खाल नहीं लटकती रहती है. The only difference between the cat and dog, sorry, cow and buffalo. So this you will see when you have actually seen a cow and a buffalo. Then second is explanatory. So you provide the alternate explanation to the student and he will learn, and we do it in the classroom lecture, in the question answer session, and in the tutorial classes. The third is guided discovery. We permit him to guide the fact, and in the process discover the fact, and in the process we suitably guide him. And therefore I have written, it is a student centric approach. बहुत time consuming है. Let the student observe and reason out and logically reason so that he discovers the truth. But this is very time consuming. We do it in seminars, mini projects, case studies, design problems. Then we have experiential techniques. Experiment कराते हैं, either the actual experiments or simulated experiments. So by observing the results and by seeing that the laws which we read in the theory class are proven in the lab class, we learn the material. Then explanatory, there student learns through exploration, self-learning, transfer and application of knowledge in new situations, major projects for 6 months, unconventional design problems, take-home problems for which you permit 15 days time, use internet and Google and explore the answer to this problem. And last one is the technique which my teachers used to follow. Dr. A. C. Rao, who later on began to become my guide also, who followed to teach us, that is denying a fact. So I have written in italics direction of current flow. ये सवाल डॉक्टर राव हमसे पूछा करते थे. When I was a student of BTech in those days, so I used to ask that when the water is flowing from a higher potential to a lower potential, the water particles are also flowing in the same direction, and the direction of flow of water particles is called the direction of flow of water. If the traffic is flowing from higher density to lower density, then the direction of movement of cars, scooters, and other vehicles is called the direction of flow of traffic. The current flows from higher potential to lower potential, but the current flow is decided by the movement of electrons. The electrons are supposed to flow in a direction of
opposite to the direction of flow of current. If the current is flowing from higher potential to lower potential, then the electrons are flowing from lower potential to higher potential. Why? ऐसा क्यों किया गया? Suppose in electrical engineering, the direction of flow of current and the direction of flow of electrons both are taken as same, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन कौन चैप्टर हमें रीराइट करने पड़ेंगे. Now such type of questions we were asked when we were in third year and fourth year BTech. तो ये जो questions हैं, I keep these questions in denying effect category. Similarly, we say sun is rising on the east, and we all know that the place on the horizon where from the sun is rising every day keeps on changing month after month. जनवरी में जहां से सूरज उगता है, फरवरी में थोड़ा हट जाता है, मार्च में और साइड में हो जाता है, अप्रैल में और साइड में हो जाता है, जून में और साइड में हो जाता है. So he follows a different pattern in rising, and therefore the definition of east where from the sun is rising keeps on changing. So either we should say that east is the direction which keeps on changing, or we should stop saying that the sun is rising from the east. Argue. तो पूरी क्लास आर्ग्यू किया करती, नहीं सर ऐसा है, नहीं सर वैसा है. So and a combination of these methods. So now we move on to assessment. The third point. पहला point क्या था? Program objectives. Defining the program objectives. Second point क्या था? Teaching learning process. Third point क्या था? Assessment, examination, परीक्षा लेना. Knowing the depth of learning of the student. और चौथा point क्या है? Outcome, program outcome. तो third point पे हम हैं propose purpose of assessment. To measure the extent of acquisition of learning at BL level, to help the learner understand their learning competency. बहुत important है. लड़के को ये समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ कौन सी चीज सीख नहीं पा रहा हूँ और मेरी लर्निंग इनकॉम्पिटेंसी क्यों है. हम ये नहीं बताते. हम ये बच्चों से कहते हैं कि तुम तो बहुत गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नहीं सीख सकते. No, this is not the way to help the learner to understand their learning competencies and incompetency and to improve their achievements. Unless until they know कि वो incompetent क्यों है इसको सीखने में, तब तक वो improve नहीं कर सकते. And to provide the feedback both to teacher as well as to the learner, because I often say that if the student fails, then part of the responsibility of failure goes to the learner and part of the responsibility has to be shared by the teacher. तो टीचर को भी फीडबैक मिलना चाहिए कि ये बच्चा क्यों फेल हो रहा है, और लर्नर को तो मिलना ही चाहिए. So as to improve the quality of teaching, to be able to offer the alternate explanation next time. Now let us go to the assessment tools. Method क्या है टेस्टिंग के? मेरे पास कई methods हैं. There are several modes through which we learn, and every mode is having its a specific learning objective. Everything cannot be learned through a single process. तो हर काम को एक सिंगल प्रोसेस बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे we cannot learn swimming through lecturing alone. अगर हमने लेक्चर दे दिया कि हाथ कैसे चलाने हैं, पैर कैसे चलाने हैं जब स्विमिंग पूल में कूदते हैं, तो खाली इतने से स्विमिंग पूल में जब हम जाएंगे तो लर्निंग नहीं होगी. In order to learn swimming, we have to jump in the swimming pool and actually move our hand and feet to experience the swimming.
Assessment is the direct testing of quality of learning and indirect testing of quality of teaching. And the different assessment tools are quiz. पहला टूल क्या है? वाइवा. क्विज लेते हैं वाइवा. इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं? MCQs, multiple choice questions. Now this multiple choice questions can have single answer and multiple answers. They can be medium order and higher order. I have demonstrated that on those 10 questions I presented before the audience, some were of lower order, some were of higher order. Then, and we are testing retention and recall in the quiz. The second tool is tutorial. In tutorial, we handle short answer questions, numerical problems, and this aims at understanding the concept. The third is assignment. Assignment is a very tricky tool. आप assignment देते हैं और बच्चे नकल करके जमा कर देते हैं. You don't have any method to check that the students don't copy. क्या हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस तरीके से नहीं बना सकते हैं कि हर लड़के के लिए प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, द लोड में बी गिवन एज 25 into रोल नंबर प्लस 150 न्यूटन्स. अगर हमने लोड किसी भी प्रॉब्लम में रोल नंबर के रेफरेंस में दे दिया तो प्रॉब्लम ही चेंज हो गया. So the assignments are to be very carefully designed. और जो अच्छे assignment हैं उनको हम लोग बोलते हैं improving assignments. So the unconventional short answer questions, design problems, case studies, application problems, practical numerical problems. So we assess the student learning through exploration, self-learning, understanding, transfer and application of knowledge. Every assignment question, we as a teacher must know that what objective assessment it is aiming at. हमने ये क्वेश्चन क्यों डिजाइन किया? अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि what do you know about Ohm's law, और वो लड़का जवाब देता है कि आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट ओम्स लॉ, तो उसको फेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूछा था कि ओम्स लॉ के बारे में क्या जानते हो, और वो लड़का सही जवाब दे रहा कि मुझे कुछ नहीं आता. सो प्रॉपरली फ्रेम द क्वेश्चन. देन फोर्थ वाज ओरल एग्जामिनेशन. दिस aims at assessing the key concepts. Then written examination, end semester examination. Mostly the questions in end semester examination are based on cramming. Rato or examination mein ugal do. So this is cramming and academic vomiting in examination hall is the rule of the game in written examination. Then group discussion, GD. Group discussion is a knowledge of organization of your thoughts, properly permitting others also to communicate, and interpersonal behavior. Then seminar, presentation, case studies. You test the preparation and presentation skills in the thrust areas of the program. Then long answer question. They are almost useless. I'm never happy with point number 8, long answer questions. Then simulation questions, application based questions, industry visits, expert lectures and seminars, and summarizing a question. Now these are the various methods of testing the students. So point number 10, application and analogy.
So same concept and principles applied in different area of study. Now to give you an example, entropy is a term which is so commonly used by us mechanical engineers. We find out the entropy of a particular process when the steam flows or something happens. So entropy is a very common term. And entropy is an equally common term with electronics and communication engineers when they talk about the communication channel. So the errors induced in the communication channel are a measure of entropy. So is there any similarity between two entropies? Is there any difference between entropy as defined in electronics and as defined in mechanical or not? So if you find it out, then you will have wonderful and exclaiming results. And this I called techno friendliness. So you should be little friendly with other areas such as computer science, electrical engineering, electronics, civil engineering. Then now let's have 2 minutes gap before we move on to the final topic, the COPO determination. वो ultimate topic है हमारा. So story goes that you may think that the answers which follow, they are funny, but actually these answers are correct. The manner in which the question has been put up, depending upon the manner in which in those manners the answer is correct. I'll give you some questions. So how can you drop a raw egg onto a concrete floor without cracking it? The answer given by UPSC topper was concrete floors are very hard to crack, because the question आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि how can you drop a raw egg onto a concrete floor without cracking the egg? तब तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता. Without cracking the floor, तब भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता. But since you have used the word it, तो दोनों मतलब निकाल आते हैं. तो इसलिए क्वेश्चन has not been properly framed. Therefore, the answer, although it seems to be funny, but it is correct. Question is, if it took 8 men 10 hours to build a bar, how long will it take 4 men to build it? Answer is no time at all. It is already built. वो जो 8 आदमी ने 10 घंटे खर्च करके वॉल बना दिए. And the fellow got 23rd rank in UPSC, opted for IFS. So the question asked was, if you have 3 apples and 4 oranges in one hand and 4 apples and 3 oranges in other hand, what would you have? Now this what would you have is confusing. So the answer which was given was a very large hand to hold such fruits. 3 एप्पल और 4 ऑरेंज और 4 एप्पल और 3 ऑरेंज पकड़ने के लिए तो दानों के बराबर हाथ होना पड़ेगा आपको. And the fellow got 11th rank in UPSC, opted for IPS. Now, how can a man go 8 days without sleep? No problem, sir. He sleeps at night. Because the question was 8 days. The question was wrong, and therefore the answer was innovative. The person got 98 rank in UPSC examination. Now, if you throw a red stone into a blue sea, what will it become? Now, this what will it become is wrong. So the answer given was, it will wet
or sink, as simple as that. अगर आप रेड स्टोन को ब्लू सी में फेंकोगे तो वो गीला हो जाएगा या डूब जाएगा. The next question asked was, what looks like half apple? And the answer given was the other half apple. अगर आप एप्पल को दो टुकड़े काटोगे ना तो जो एक टुकड़ा जो है वो दूसरे टुकड़े का रेप्लिका होगा. He was IAS topper. So the question was, what can you never eat for breakfast? Breakfast में आप क्या कभी भी नहीं खा सकते हो. And the answer given was dinner, because the question was wrongly framed. तो ऐसे ही अगर हम और आप क्वेश्चन प्रॉपर फ्रेम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई इनोवेटिव स्टूडेंट हो जाएगा, वो आपको ऐसे ही आंसर देगा, नील्स बोर टाइप ऐसा आंसर देगा और आप स्काई स्क्रैपर की हाइट निकालते रह जाएंगे और उसको फेल कर देंगे. देन the Bay of Bengal is in which state? The answer given was in liquid state, because Bay of Bengal contains water and it is in liquid state. So you can lift an elephant. How can you lift an elephant with one hand? The answer given was, you will never find an elephant with one hand. देखिए ये वन हैंड है, इसमें ये क्लियर नहीं है कि आपका हाथ है कि एलिफेंट का हाथ है. Since the question was wrongly framed and therefore the answer was correct. Now, the interviewer in one interview said, I shall ask either 10 very difficult, in simple questions or one very difficult question, really difficult question. आप चूज कर लो कौन सा पूछना है. 10 आसान सवाल पूछें कि एक डिफिकल्ट सवाल पूछें. Think well before you make up your mind. So the student said, the boy thought for a while and said, my choice is one really very difficult question. The examiner said, well, good luck to you. You have made your choice. Now tell me, what comes first, day or night? The boy was jolted into reality, as his admission depended on the correctness of his answer at IIM Ahmedabad. But he thought for a while and said, it is day, sir, not night, it is day, sir. How? The interviewer said, sorry, sir, you promised me that you will not ask me a second difficult question. And he was selected for IIM Ahmedabad. So let us come to the next phase, which I intend to take about half an hour. And I seek permission of the organizers to permit me my own way of presenting the text for next half an hour. Okay? So now we will talk about design of outcome-based education. Now we have seen outcome-based education is nothing new. New education policy, which has been presented in 2020 by the government of Honorable Modi ji, is nothing new. We had outcome-based education 5,000 years back in our country. And what we are doing is, really we are reinventing the wheel. So I will very quickly go through some elementary things which are essential now after new education policy, because you know that every institution has to be a degree awarding institution, a standalone degree awarding autonomous institution, or a university associated and affiliated have gone. So it should be
university institution. So the institution like BBD, ITM have to decide that in next 10 years what they have to do, whether they have to merge in a university or become a degree awarding institution by themselves. This is a essential law in new education policy. Anyway, we'll have academic system. We move from marks based system to grade based system. We move from rigid system to flexible system and course based system to credit based system. And this credit based system has got facilities so that the student can register for any courses of their choice, and they can alter the pace of learning within the broad framework of academic program and credit requirements. The student can register the courses of their interest and academic ability and completing them. कोई जरूरी नहीं है कि सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में हमको 10 कोर्सेज लेने पड़े, 6 थ्योरी और 4 लैब कोर्स. I'm a only 4 courses. So this is permitted. The FCS, as it is commonly known, allows a student in deciding their academic plan and permits the students to alter it as they progress during the program. तो अभी भी इस सेमेस्टर में मैंने 4 कोर्स लिए, अगले सेमेस्टर में 6 की जगह 7 कोर्स ले लूंगा. Everything is permissible. And we will have 3 categories of students: slow pace, normal pace, and fast paced learner. So the first term which needs to be defined is a program. So it is a specialization of discipline leading to a particular degree. So it is the interconnected arrangement of courses, co-curricular, extracurricular courses, passion courses, hobby courses. Passion मतलब जिसके पीछे आप पागल हैं. Passion courses, hobby courses, foundation courses, core and elective courses, and group of them under the framework of this system, flexible system, to make a program. And we'll have a program such as BTech, mechanical engineering. Then the second definition is program objective. Now this is very important. और यहीं से हमने अपना कोर्स शुरू किया था. That every education, every object, program, every learning has an objective. So the program objective, the objective of BTech mechanical engineering program is it describes what the students are expected to do at the time of graduation. 4 साल के बाद जब वो एजुकेट कर हो जाएंगे, ग्रेजुएट होके निकल जाएंगे, तो वो क्या कर सकेंगे. So at the time of graduation, what they will be able to do. Now besides POs, we also have PEOs and PSOs. My objective is not to differentiate between them. मैं थोड़ा थोड़ा definition दे दूंगा बस, that is all. मेरा objective COPO mapping and attainment है. So PEOs are the statements that describe what the graduates are expected to perform and achieve during the first few years after graduation. And then the third thing is program specific objectives. They are the objectives, special competencies related to BTech mechanical engineering program. Generally, these are 2 to 4 program specific objectives, and together POs and PSOs called POs, program objective. ये जो difference है ना, ये हम आगे चल के नहीं करेंगे. So the program objective of every program is fixed beforehand while designing the program and before admitting the student. So
प्रोग्राम बनाने के पहले सपोज यू वांट टू हैव ए प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक in agriculture engineering, then the program objective of the program in BTech in agriculture engineering has to be designed before admitting the student. प्रोग्राम में लड़के भर्ती करने के पहले, पढ़ाई करने के पहले आपको बताना पड़ेगा. Now they are called POs. Now POs are based on graduate attributes, GAs. Graduate attributes are the attributes which a graduate is likely to have, and they are defined as the individually accessible outcomes that indicate the graduate's potential to acquire the competencies in that program. The GAs are the attributes in terms of knowledge, skills, attitudes, and values. Values for system. Values make concern for society, concern for your country, concern for your state. So everything is included in graduate attributes, and based on graduate attributes, we define the program attributes. So GA includes the capabilities to strengthen and improve knowledge and skill, to undertake higher studies in that field, and to be socially responsible. We should be become a responsible citizen. Now, generic program objectives are framed from academic related topics like professional knowledge, problem analysis, design development solutions, conduct investigation of complex problem. He will be able to work individually as well as in teamwork, and will have lifelong learning competencies. Plus, some moral and spiritual values should also be inculcated in the students, like professional ethics, integrated value system, physical and mental wellness, various skill sets, hobby courses, and the passion courses. Passion courses are those courses about which the students are highly passionate. Like, I'm very passionate to learn music. So while I'm doing BTech in mechanical engineering, I should be permitted to have 1 or 2 courses in music. Then the third area is socially sensibility area, like education in society, environment protection, sustainability. Anything which you do has to be sustainable. Then national constitution, culture and heritage, and healthcare awareness. Now the third point term which we need to define is program structure. So structure of the program contains open courses, open core, open elective, program core, program elective, then curricular, co-curricular, passion courses, credit requirement, all these make together to form program structure. Then the program structure, that means open courses, open elective baskets from which you can choose the courses, is like a buffet system. So you have a basket of open core, a basket of open elective, basket of program core, and basket of program elective, plus basket of passion courses, basket of value courses, sustainability courses, and other types of courses. And then you are asked to take given number of courses from the different baskets, but the choice will depend upon the student. For in a buffet system, when the buffet is laid down, then you can take any number of buffet items. But when I go for buffet, then the
host will prevent me from taking more number of desserts. वो कहेगा नहीं मिठाई तो आप एक ही लेंगे, एक से ज़्यादा नहीं लेंगे. So therefore restrictions are put because my health and because of my sugar problems. So plus delivery of these courses and the mechanism of assessment of these courses, हम क्या टेक्निक अडॉप्ट करेंगे असेसमेंट की, तो ये कहलाता है करिकुलम. And then the course is the smallest entity and is defined as the theory, practical, project, seminar, field work, self-learning subject, which we study during the semester. Then the course objective. Every course has a course objective. So course objective are statements that describe significant and essential competencies that the learners will achieve and can reliably be demonstrate at the end of the course. कोर्स खत्म होने के बाद हम ये सब चीजें सीख जाएंगे. Generally 3 or more course objectives may be specified. Generally हम लोग क्या करते हैं कि 5 यूनिट का एक कोर्स होता है, so we have 5 objectives. और उन सब का वेटेज भी होता है, क्रेडिट भी होता है. So CO must be measurable. We should be able to measure it. Attainable. We should be able to attain those objectives and manageable. CO should reflect the level of knowledge, the skills, the attributes developed upon the completion of the course. The CO should add up to contribute to attain POs such that each CO should address at least one PO. जो कोर्स पढ़ा रहे हैं आप, वो किसी न किसी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है. And each PO must be reasonably addressed by adequate number of COs. Now this information is generally kept in a matrix form and is known as COPO matrix. So the CO of every course are fixed before admitting the students and before designing the course. It is pertinent to mention that CO of a course of a program will add up to form the PO, program objective. तो कोर्स ऑब्जेक्टिव को अगर आप ऐड कर देंगे तो सम हो जाएगा प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव. So the CO must be defined under the umbrella of POs. फिर तो नेक्स्ट टर्म है सिलेबस. कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, LTPC, वेटेज, वर्जन ऑफ सिलेबस, prerequisite, anti-requisite, co-requisite. These requirements are called syllabus. And this syllabus. Then course flow chart. So it tells us कि कौन सा कोर्स हम पहले पढ़ सकते हैं और कौन सा कोर्स के बाद पढ़ेंगे. For example, in a course flow chart, the elementary strength of material will come first and the advanced strength of material will come later. Course plan. All the lectures, experiments, LTPC, mode of delivery and mode of testing, reference material makes the course plan. And then the credit distribution. The courses from different basket belonging to engineering, science, humanities, management, arts, history, language, law, commerce, skilling, passion, hobby, finance, accountancy are to be required. ये सब डिसाइड करना पड़ता है कोई प्रोग्राम बनाने में. And teaching learning process plus assessment process, this ultimately decides the program structure. The अब ये learning objective last. I'm sorry I had to take this call. I have to take this. Somebody is calling from Qatar. Please excuse me. हाँ विनायक. हाँ ठीक है. नहीं अभी
एक वेबिनार में लेक्चर ले रहे हैं। तो आपको वो स्लाइड याद है जिसमें मैंने 4 स्टेप्स बताए थे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस और लर्निंग आउटकम। उसको याद रखिएगा। The achievement of learning objective is assessed after the course is delivered and is called the learning outcome. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद कोर्स को पढ़ाते हैं, डिलीवर करते हैं, उसके बाद कोर्स को एग्जामिन करते हैं, डेप्थ ऑफ लर्निंग, और फिर लर्निंग आउटकम निकल के आता है. So every course will have course outcome and program will have program outcome. कि प्रोग्राम आउटकम्स इनको मैच करें, तो अगर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम आउटकम बढ़िया मैच हो जाते हैं, देन द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी गुड. और अगर मैच नहीं हो रहे हैं, देन देयर इज अ गैप. सो टू समराइज, अब ये समरी है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की. आउटकम बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट्स विद a clear understanding of what knowledge, skill, attitude, values the graduate will be able to acquire to justify the degree awarded. They should be measurable. They are stated as program objectives and they should be related to vision and mission statement of the institute, department and the university. Different courses selected for the program are listed in the form of matrix of the four of a program. The degree of correlation of CO and PO is given as CO-PO matrix. So a particular course, how much, what is the level of correlation of that course with a particular PO, that is called degree of correlation. अभी आगे define करेंगे. So all CO should be collectively added up and give PO. The teaching learning process has to be carefully planned so that delivery of courses nahi, delivery mechanism of delivery of courses achieves the CO. The learning objectives which help the student to reach the objectives are provided by the institution and suitable facilities are created. Proper assessment tools should be used at the appropriate time to monitor and improve. The assessment should be commensurate with the level. ऐसा नहीं है कि टॉपिक तो आपने बड़ा इजी पढ़ाया और क्वेश्चन उसके हाई लेवल के पूछ लिए, ये नहीं होना चाहिए. Years I know for certain कि हम टीचर्स लोग क्वेश्चन डिजाइन करते समय पढ़ाया किस लेवल पे इसके बारे में केयर नहीं करते. This is wrong. The assessment should be learning objective oriented, कि लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए and should not be randomly designed, क्योंकि हम लोग तो रैंडम ही डिजाइन कर उसका एक जो सीओ है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. डिटेल्ड सिलेबस मैं नहीं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ. तो थ्योरी मशीन के 5 यूनिट्स थे. पहला यूनिट जो था लिंकेज मैकेनिज्म, दूसरा फ्रिक्शन ड्राइव्स, तीसरा फ्लाईव्हील, चौथा गवर्नर, पांचवा गायरोस्कोप. You are all mechanical graduates, so I think you should be able to understand that these are the 5 units. And the course objective, the first unit is this, second unit is this, third unit is this, fourth is this, fifth is this. So I defined the course objective, and this definition of the course objective suggested कि आपने जो यूनिट 2 पढ़ाना है
वो तो बड़ा एलिमेंट्री लेवल का पढ़ाना, BL लेवल 1 का पढ़ाना है, सो बहुत ही लो लेवल का पढ़ाना है। जो यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट हायर लेवल का पढ़ाएंगे, और जो आप यूनिट 3 पढ़ाएंगे वो आप और हायर लेवल का पढ़ाएंगे, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स डिजाइन ऑफ फ्लाई व्हील। तो चूंकि मैं डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, so therefore the level of transmitting the information to the student must be much higher, and these levels are generally termed in terms of correlation. कोई भी कोर्स ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव आपस में कैसे रिलेटेड हैं, they are termed by degree of correlation. There are 4 degrees of correlation: 0, 1, 2, 3. 0 means no correlation, 1 means mild, 2 means moderate, and 3 means a strong correlation. And this is the matrix which gives you the correlation between the courses and the program objectives. So courses in the first column, program objectives in the first row, and in the cells you will find the numbers as 1, 2, 3, और जहाँ कहीं नंबर नहीं दिया है उसको 0 ले लो. So let me take the program objective 4. So PO4, the course XX11, XX12, XX13, up to XX17, all these 7 courses are correlated with program objective 4, and the level of correlation is first course का है level 2, second course का 0, third course का 3, fourth course का 3, fifth course का 0, sixth course का 0, seventh course का 2. Now this is a simple matrix. The elements represent the level of correlation between a particular CO and a particular PO. So this is called CO-PO matrix, correlation between the course objectives and the PO objectives. अब last 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे. Please bear with me. I'm very much thankful to you for permitting me extra time. So methodology for direct and indirect attainment level, ये बहुत ही important है हम टीचर्स के लिए, हर टीचर को समझना पड़ेगा. So first slide talks about calculation of CO attainment, and the CO attainment is of 2 types: direct attainment and indirect attainment. Third column देखो आप category, direct assessment and indirect assessment. Direct assessment वो assessment होता है जब हम उसको numerically assess कर लेते हैं डायरेक्ट किसी तरीके से, क्विज से, असाइनमेंट से, एग्जामिनेशन से, मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से जो करते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट असेसमेंट. सो CO attainment of theory and lab courses through sessional examination, viva, tutorial, assignment, and semester examination is called direct assessment. Direct assessment की वैल्यू डिफरेंट पेपर्स में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में 70 से 80 के बीच में रहती है. Some take this as 70% of the total marks, some take this as 80%, some take this as 75. So if it is 70%, then the indirect will be 30. And if it is 80%, then the indirect assessment is 20%. The remaining assessment is indirect. And indirect assessment is based on the feedback from the student, teacher, alumni, the promoters. ये देखिए हमने आगे दिया. So direct assessment is tested during the examination. जितने marks मिले हैं बच्चे को उससे टेस्टिंग हो जाती है.
direct assessment. Indirect assessment कैसे होता है? Now I'll give 1 minute to this slide because indirect assessment में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कंपोनेंट लिए हैं. Indirect assessment जिसका वेटेज 20% से 30% होता है, उसके मैंने 5 कंपोनेंट दिए हैं. The first component is feedback on curriculum from final year students जो ग्रेजुएट करके जा रहे हैं. 10% उनका फीडबैक लिया और उसके वेटेज कितना होगा? 10% वेटेज ऑफ इनडायरेक्ट असेसमेंट which itself is 20% of the total assessment. Then feedback on curriculum from teachers, ये भी 10%. और टीचर भी 10% फीडबैक देंगे कि जो क्वालिटी क्या थी करिकुलम की. Feedback on curriculum from human resource or the employers of students and the external mentors and the industry, 20%. जब इंटरव्यू लेने आते हैं, प्लेसमेंट में आते हैं, लेक्चर देने आते हैं, तो उस समय हम फीडबैक लेते हैं. तो एक्सटर्नल मेंटर्स का, एक्सपर्ट्स का फीडबैक, इंडस्ट्री का फीडबैक, एम्प्लॉयर्स का फीडबैक और HR पर्सनल का फीडबैक, इसका वेटेज 20%. देन फीडबैक ऑन करिकुलम फ्रॉम एल्यूमनाई, जो साल 2 साल पहले पास हुए एल्यूमनाई हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उसका वेटेज 20%. और फीडबैक फ्रॉम को करिकुलर एक्टिविटीज 40%. टुगेदर इट मेक्स 100. एंड दिस इज इनडायरेक्ट असेसमेंट. सो इनडायरेक्ट असेसमेंट के हमको परफॉर्मा बनाने पड़ेंगे. We'll have to design the performas and tables which will be filled by students, the mentors, the alumni, HR and employers, and give you the indirect assessment. Now, अब हम क्या करते हैं कि पहले let me take this slide first. So final calculation कैसे होता है कि direct assessment is equal to half external assessment plus half internal assessment. क्योंकि external assessment होता है end semester examination, internal assessment होता है sessional marks. तो sessional marks में जितना marks मिले हैं उसकी basis पे 50% और 50% एंड सेमेस्टर का. और इनडायरेक्ट असेसमेंट अभी मैंने कंपोनेंट बनाया आपको वो. तो जो डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट को मिला करके टोटल 80% प्लस इनडायरेक्ट असेसमेंट इनटू 20%. ये 80 और 20 क्या है? 80 और 20 ये जो वेट्स हैं जो हमने यहाँ दिए थे, 80 एंड 20. 70 और 30 भी हो सकता है, 75 और 25 भी हो सकता है. ओके, नाउ वी कम बैक टू द CO अटेनमेंट टारगेट लेवल. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अटेनमेंट के टारगेट कैसे फिक्स किए जाते हैं. ओके, सो the targets are like this. internal examination क्या मतलब? इसको हम लोग बोलेंगे सेशनल एग्जामिनेशन. ये आसानी से समझ में आएगा, हमारी फैकल्टी को समझ में आएगा. सेशनल एग्जाम, सेशनल एग्जाम का अटेनमेंट ऊपर दिया है और एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम का अटेनमेंट नीचे दिया है. तो हमको ये लेवल फिक्स करना है कि 60% और मोर स्टूडेंट्स कितने नंबर पाएंगे, परसेंटेज नंबर कितने पाएंगे. So therefore, suppose we say that X is the percentage of marks which more than 60% students will find, will get in internal examination or sessional examination, then ये चीज पूरी हो गई. तो ये X कहाँ से निकलेगा? ये आएगा कहाँ से? क्या करते हैं,
The target values of X and similarly Y are decided based on previous results. तो मान लीजिए मैं मैकेनिकल में सेकेंड ईयर में एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड we have 60 students. I want to fix the target values for X and Y. Then I will find out what is the marks obtained by the students in the same course last year and 1 year before that. पिछले 2-3 सालों में जब से वो कोर्स चल रहा है बच्चों के मार्क्स कितने आए थे, और उसके बाद मान लीजिए क्लास में 100 लड़के हैं तो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखेंगे, और अगर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टारगेट वाई हमें निकालना है तो जितने नंबर बच्चों ने पाए थे आई विल मार्क द marks obtained by student in descending order, highest mark at the top and lowest mark at the bottom. Then I will see 61st स्टूडेंट ने कितने नंबर पाए हैं. सो इस 61st स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 48 हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि 48% अगर हमारा वाई था तो 48% मार्क्स 60% या उससे ज्यादा स्टूडेंट के थे पिछले एग्जामिनेशन में. सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई for 2020, 2019, and we will guess the value we will try to obtain in 2021 examination or 2022 examination, next examination. Naturally, the value has to be slightly higher. So suppose मैं चेक करता हूँ कि 2019, 2020, 2021 में the value of y are close to 48, 47, 49. तो अब हम क्या करेंगे कि 2020 के लिए टारगेट वैल्यू 50 रख लेंगे. So I'll claim that my students who are going to appear in 2022 strength of material examination, then 60% of these students will get more than 50% marks. Similarly, internal examination में भी X तय हो जाता है. So suppose for external examination, Y is fixed at 50, and for internal examination, X is fixed at 70. क्योंकि सेशनल मार्क तो वैसे ही ज़्यादा मिलते हैं लड़कों को 70, 80, 75, 90. तो देयरफॉर परहैप्स 60% या उससे ज़्यादा बच्चों को 70 मार्क्स मिले होंगे सेशनल मार्क्स. सो लेट मी टेक x is equal to 70 and y is equal to 50 as an example. So if my अब एग्जामिनेशन हुआ, कब का एग्जामिनेशन हुआ 2022 का, then I'll find out the marks obtained by the students and I will find out कि कितने परसेंट मार्क्स, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं. तो हम ये देखेंगे कि 60% मार्क्स हमारे जो हैं 40 और 50 की रेंज में हैं, 50 और 60 की रेंज में हैं, या 60% से ज़्यादा बच्चों के हैं. तो अगर 60% से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 50% हैं, then I will say that my attainment level is 3, then I am extremely good, excellent. excellent टीचिंग हुई है क्योंकि हमने टारगेट रखा था 50 और अचीव भी कर लिया 50. But if only 55 students, 55% students, which is between 50 and 60, have obtained 50% marks, then I'll give level 2 as the attainment level of strength of material in 2022 examination. And if my attainment level is between 40 to 50, 40% तो पास है, 40 to 50 जो पास हुए लड़के,
थर्ड डिवीजन पास हुए हैं, it is 60%. Most of the students are passing with marginal pass marks. इसका मतलब मेरा attainment level 1 है. So therefore, I will define the attainment level of the course as if CI is less than or equal to 1, then the attainment level is unsatisfactory. If it is between 1 to 1.5, then it is satisfactory. If it is between 1.5 and 2.5 for any particular course, then it is good. And for ith course, क्योंकि CI डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, CI means for ith course, the CO attainment level. If my CO attainment level is between 2.5 and 3, then my attainment is excellent, and this is at serial number 4. इससे ऊपर तो हो नहीं सकता, 3 के ऊपर जा नहीं सकता, 3 is the upper limit. Then we calculate the attainment level of program objective. So if PJ is defined as the attainment level of jth program objective, so jth program objective is equal to sigma Wij Ci divided by sigma ij. जैसे हम लोग CGPA और SGPA निकालते हैं, उसी तरह से PJ निकालेंगे, और इसके लिए हमको ये टेबल जरूरत पड़ेगी, ये टेबल. सो मान लो कोर्स नंबर 4 का हमको प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव निकालना है, PO4, सो J इज इक्वल टू 4, ये निकालना है. तो हम क्या करेंगे, C1 इसका जो लेवल है मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई 0 plus C3 multiplied by 3 plus C4 multiplied by 3 plus C5 into 0, C6 into 0, and C7 into 2. This will give you PO P4. So P4 निकल आएगा. And from different P4s, we will take the average of them to get the calculation for attainment level of the overall average PO. So it is the average of P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus Pn divided by n. Simple arithmetics. And depending upon whether the PO is in the range 1 to 3 or less than 1, our attainment level of PO is unsatisfactory, satisfactory, good, or excellent. Now with this, we conclude. My sincere thanks are due to my faculty members who have given me very careful listening, and I enjoyed delivering my lecture. Okay, thank you all. Now maybe we can have 5 minutes question. कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई चीज हम समझा नहीं पाए हो, तो पूछिए. And please award me marks out of 10. How much did you enjoy? Because I am. If anybody has. Yes. Because I am going to award myself as 8.0 on this lecture. 8.0 out of 10. And will request the faculty members to award marks to me for daily. Anyway, questions. Let me have the question hour. Sir, I have one question, sir. Sir, please. Permit me, sir. Please, bilkul. Suppose, sir, if any CO, if we are not getting, we have developed a matrix and वहाँ सेल में हमने सपोज कीजिए कि 3 मार्क्स अवार्ड कर दिए हैं इसके अंदर पर्टिकुलर सेल में, और अगर हमें वो अचीव नहीं हो रहा है, तो क्या हमें अपना CO चेंज करना चाहिए या नहीं,
क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए पहली चीज तो क्या है, बिल्कुल रूल याद रखो, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन डिसाइडिंग योर टारगेट लेवल्स। टारगेट्स लेवल आपको कैसे डिसाइड करते हैं? टारगेट लेवल आप डिसाइड करते हैं, 22 का टारगेट आप डिसाइड करेंगे, 21 में, 20 में, 19 में अचीवमेंट कितना हुआ। अगर अचीवमेंट मान लीजिए जो भी लेवल आ रहा है 47, 48, 49 कुछ आ रहा है, then for 22 the target level cannot be less than this. Now at the best it can be equal to that. Number one. So target level should not be very ambitious. और मैं बल्कि ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 2021 का, 2020 का और 2019 के जो टारगेट्स हैं उनका आप जो हाईएस्ट उनमें से जो आया बस वही ले लो, इम्प्रूव करने की कोशिश ना करो, क्योंकि अभी तो सीख रहे हो ना आप, आपको अंदाज लगाना है। तो मान लो 47, 48, 49 था, तो इस साल भी 49 ले लो और 49 पे ट्राई करके देखो। तो ज्यादातर क्योंकि 49 से कम लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इमीडिएटली वो सवाल पूछेंगे जो एनबीए वाले हैं या नैक वाले हैं, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव एनबीए है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है एनबीए, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑनेस्ट डिलीवरी इन दी क्लास। आपका ऑब्जेक्टिव एनबीए, तो उस ऑब्जेक्टिव से आप देखें, वो फिर क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो लेवल टारगेट लेवल है रिड्यूस को किया, यू कैन नॉट रिड्यूस इट। और दूसरी चीज एक बात मैं आपको और बता दूं कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट सीओ एंड पीओ अटेनमेंट लेवल्स। या बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल जैसे 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, उस तरह मैंने समझाया है। जो एक्चुअल मेथड है सीओ अटेनमेंट, पीओ अटेनमेंट, वो बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई एम राइटिंग ए रिसर्च पेपर ऑन सीओ पीओ अटेनमेंट लेवल्स। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर रिसर्च पेपर बन सकता है इस पे, तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड इफ डायरेक्टर सर परमिट्स, sometimes later we'll have a class on CO PO attainment level with more insight. बाकी चीजें हम छोड़ देंगे, we will only discuss CO PO attainment levels, कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझे? क्योंकि अभी अगर 5 मिनट देंगे क्या मुझे? Yes. If you give me 5 minutes. Yes, sir. Yes. Yes, sir, please. क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन गायब हो गया, रुक गया, मैंने प्रेजेंटेशन ढूंढूं कहाँ गया। anyway, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। आई एम रियली सॉरी, somehow I have lost my presentation. वो मैंने उसको बंद कर दिया, वो गायब हो गया। अब दोबारा मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा उसको। ओके Sir, तो I have one more question, sir. नहीं पहले मैं जवाब दे दूं ना, ये सवाल मेरे दिमाग में आया। देखिए, आई हैव प्रेजेंटेड क्यूरियम मशीन कोर्स, अगर आपको याद है क्यूरियम मशीन का कोर्स मैंने प्रेजेंट किया था और उसके सीओ लेवल दिए थे। The level of 1 CO was BL1, the level of 3 CO were BL2, and the level of 5th CO was BL5. So whether every unit has a different CO level, and every unit will have a different type of question. So if I have a simple question from unit 1, I can have a moderate question from unit 2, and I have a difficult question from unit 3. ये समझ में आ रहा है ना? So therefore, depending on the level of delivery, BL level of delivery, whether my level is same or not. ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे अगर आपको याद हो तो फ्लाईव्हील में मैंने BL3 लिया था, मतलब जो लेवल था वो डिफिकल्ट लेवल था, क्योंकि मैंने बताया था कि डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील उसमें जुड़ा हुआ है।
और मान लीजिए मैंने एग्जामिनेशन में बड़ा सरल सा क्वेश्चन रख दिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन फ्लाई व्हील, देन डू आई नीड टू मॉडरेट? तो गड़बड़, ये तो गड़बड़ हो गया, बिकॉज द डिलीवरी लेवल वाज वेरी हाई एंड द असेसमेंट लेवल इज वेरी लो, सो द डिलीवरी लेवल इज नॉट मैचिंग द असेसमेंट लेवल। समझे? तो अगर डिलीवरी लेवल और असेसमेंट लेवल मैच नहीं कर रहे हैं तो हमें मॉडरेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मॉडरेशन ऑफ अटेनमेंट लेवल्स। अगर मान लीजिए डिलीवरी लेवल स्लो था, 1 था, और अटेनमेंट लेवल हाई कर दिया, जो असेसमेंट लेवल हाई कर दिया, क्वेश्चन मैंने बड़ा हाई ऑर्डर का पूछ लिया, तो कम ही बच्चे होंगे जिनके साथ अच्छे नंबर आएंगे। तो कैन बी इंक्रीज the percentage of students getting more than 60% marks, इसको कहते हैं मॉडरेशन। तो मॉडरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ COPO अटेनमेंट। अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो कभी आगे डिस्कस करेंगे। आप चांद साहब, आपका सवाल। सर एक आपने पॉइंट इसमें मेंशन किया था कि जब हम सीओ फ्रेम करते हैं और पीओ वगैरह के साथ मैपिंग करते हैं, उसमें हम अपना विजन और मिशन जो है उसको भी ध्यान में रखते हैं। इसका क्या मतलब सेंस है? ये बहुत बहुत मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जो मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं एडवाइजर हूँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी, उसके विजन में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन at affordable cost to every state of students। तो एडमिशन में ये देखा जाएगा कि फीस कितनी ले रहे हैं आप, आपकी फीस दूसरी के फीस से कम है क्या, और फिर ये देखा जाएगा कि क्या आपने SC उत्तराखंड के जो नेटिव्स हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की हैं, गर्ल्स के लिए की हैं कि नहीं की हैं, कि सारी सीटें आपने नेपाल से और भूटान से भर दी हैं। समझे? जो नॉर्मली करते हैं। सो विजन और मिशन को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, और विजन और विजन से आपका बनता है क्वालिटी गोल्स, और क्वालिटी गोल से फिर बनेगा प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। ये सब वाटर फ्लो मॉडल है, एक से दूसरा बनेगा। विजन से मिशन, मिशन से गोल्स, गोल से आपके ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड देन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। तो ये फ्लो बनेगा। अगर आपका मिशन या विजन आप मुझे मेल करें तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें, अगर उसमें ये दिया गया है कि बच्चों को आप उनको जो फ्लेक्सिबल सिस्टम रखेंगे, फ्लेक्सिबल मीन्स उनके जो पैशन कोर्सेज हैं उसका भी आप ध्यान रखेंगे। सो देयरफॉर यू नीड टू प्रोवाइड पैशन प्रोग्राम्स। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहते हैं और 2 कोर्स लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के और 2 कोर्स लेना चाहते हैं म्यूजिक के, तो दिस इज परमिटेड, दिस इज परमिटेड, दिस इज नॉट परमिटेड इन AKTU। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि AKTU के विजन में ये कहीं नहीं है कि हम आपके पैशन प्रोग्राम को नर्चर करेंगे, आपके हॉबी कोर्सेज को नर्चर करेंगे। जिस काम में तुम्हें मजा आता है उस काम में तुम्हें कोर्सेज देंगे, हम तुमसे कभी कमिट नहीं किया। ये हमारी यूनिवर्सिटी ने कमिट किया है, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं वो इस टाइप के कोर्सेज बने हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करिए, कंप्यूटर साइंस में बीटेक करिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के भी कोर्स ले लीजिए कि कम से कम आप ये तो समझ सकें कि इंडिया का जो बजट आया है, प्रेजेंट हुआ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, उस बजट के मेन फीचर्स क्या हैं ये आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है और अगल बगल तो मालूम ही नहीं है। सो देयरफॉर यू हैव टू बी टेक्नो फ्रेंडली।
You should be very friendly with other courses, other areas. अगर आपका लॉ का कोर्स है तो थोड़ा कंप्यूटर साइंस में घुसेगा, अगर आपका एग्रीकल्चर कोर्स है तो उसमें थोड़ी सी इंजीनियरिंग भी घुस जाएगी, समझे? तो ये चीजें पॉसिबल है. Yours, since you are having the affiliated institution, तो इसलिए आपकी लिबर्टीज लिमिटेड है. Yes, sir. आप क्या कर सकते हैं कि आप डिलीवरी में चेंज कर सकते हैं. ये कहा है, मान लो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, तो मुझसे ये तो कहा गया है, AKTU ने कहा है कि आप ये चीजें पढ़ाइए, लेकिन ये चीजें पढ़ाने के अलावा थोड़ा बहुत 5-10% आउट ऑफ बॉक्स जा करके थोड़ा अलग भी बताइए. और ये इससे लिए कोई मना तो नहीं करता, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा सकते आप. तो मैं अगर आउट ऑफ बॉक्स जाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत डिफरेंस हो जाता है. जैसे आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि मेरे जब मैं लेक्चरर था, मे बी 40-45 ईयर्स बैक, तो मेरे जो डायरेक्टर थे वो मेटलर्जी के BHU से PhD थे, डॉक्टर KV कामत. कोई भी क्लास खाली होती थी उस क्लास में घुस जाते थे, समझे? और वो चाहे मैकेनिकल की हो, चाहे सिविल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, कुछ भी हो. और लड़कों शुरू हो जाते थे, सिगरेट पीते हो? तो लड़के नहीं सर, यार देखी तो होगी, डब्बी तो देखी होगी. अच्छा, उसका जो वो बनता है, फॉयल बनता है, एल्यूमिनियम का फॉयल कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, मटेरियल क्या है, वो चालू होते थे क्वेश्चन करना. आधा घंटा निकाल देते थे पढ़ाते पढ़ाते. लेकिन वो मटेरियल साइंस पढ़ाते थे, लेकिन वो रिलेटेड रहती थी आपकी सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से. नॉर्मल कोर्स, सिगरेट सभी पीते हैं जो उसमें स्टूडेंट लाइफ में, तो सभी ने वो पन्नी देखी होती है, तो बड़ा मजा आता था. अच्छा जी, ऐसे बनती है, ये बनती है, समझा जाया करते थे. तो समझाने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया है. तो डिलीवरी ऑफ कैरिकुलम और जो आप सेशनल एग्जामिनेशन रखो वो आप थोड़ा सा वैसा रखो. और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव लड़कों का है वो भी आप देखो, क्योंकि आपको, बिकॉज यू आर नॉट ए स्टैंड अलोन कॉलेज और स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी, तो आपको एडमिशन्स भी एक इशू है. अगर आपने बहुत ही स्ट्रिक्ट पैटर्न कर दिया तो UPTO या AKTO के बच्चे नहीं आएंगे फिर आपके यहाँ, समझे? सो देयरफॉर जैसे वही कहानी होगी, जब हमारे पहला बार एडमिशन हुआ 2000 में, तो 50,000 बच्चे हमने एडमिट किए, 50,000 में 35,000 फेल कर दिए. तो हम लोगों का घेराव हो गया था. और ये तो दुर्ग सिंह चौहान कहा करते थे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो MIT से नीचे नहीं, हमने भी 35,000 बच्चे फेल किए हैं, समझे? तो ही यूज्ड टू टेक प्राइड इन फेलिंग दी स्टूडेंट. I was concerned about why the student failed. और हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था ये पता करने के लिए कि लड़के फेल क्यों हुए हैं और लड़के पास कैसे होते हैं. सो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, तो इस पे ध्यान दो. लड़कों को फेल करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम लड़कों को पास करने के लिए बैठे हैं, समझे? और हमारी जो डिफिकल्टीज हैं दे आर मैनी फोल्ड. टोटल डीमोटिवेटेड स्टूडेंट है, ना कोई सैलरी ऊपर से मिलेगी, ना कोई पैसे मिलेंगे, ना कोई फाइनेंशियल है, ना डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीठ पे हाथ रखेगा, शाबाशी देगा, और हमसे खरे साहब कह रहे हैं कि बढ़िया ऐसा करो, ये करो. ये चीज़ें डिफिकल्ट बहुत हैं. तो अगर मान लीजिए कभी वाकई में आप लोगों को लगता है तो स्पेसिफिकली ऑन दिस टारगेटेड हम लोग डिस्कशन करें, डेफिनेटली सर, क्योंकि दिस विल रिक्वायर ए डिटेल डिस्कशन. तो मैंने अभी ये एडमिट किया कि हमने COPO मैपिंग बिल्कुल टच की है. अभी हमने, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना फ्लो ऑफ लाइट, तो हम लोग पहले क्या पढ़ा करते थे, लाइट फ्लोज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. फिर आगे हमने पढ़ा कि नहीं, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए कर्व. फिर पढ़ा कि साहब ये प्लाज्मा है, ये है, वो है. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे हमको अंदाज लगता जाएगा कि क्या है सीओपीओ मैपिंग। ठीक है, Thank तो you, आज sir. तो हम इतना ही बता सकते हैं सीओपीओ मैपिंग। Yes, थैंक sir. यू, थैंक यू, We have learned a lot. थैंक यू सर, थैंक यू। कोई सवाल और है? जी नमस्ते सर। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ सर? प्लीज प्लीज, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अभी आपने जब सीओपीओ की मैपिंग के बारे में डिस्कस किया और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के ये बात कही कि जब हम सीओपीओ की मैपिंग करते हैं तो उसमें कुछ मॉडरेशन करने की हायर लेवल पे हमको जरूरत भी होती है और वो मतलब मजबूरी भी होती है, ये दोनों ही सब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। जी, मैं इसके एक थर्ड आयाम में मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि जब हम सीओ और पीओ की मैपिंग के लिए 0 to 3 लेवल्स देते हैं, तो जैसे आपने अपनी मैपिंग में पीओ 4 के साथ मैपिंग को एक्सप्लेन किया था, जी, उसमें आपने कुछ जगह पे 2 लिया था, कुछ जगह 3 लिया था। जी, जो 3 आपने लिया था वो इस बेसिस पे लिया था कि ये हाईली मैप्ड है और यहाँ से वो पीओ बेसिकली सीओ को बहुत बेहतर कनेक्ट करता है, हाईएस्ट कनेक्ट करता है। देखिए अब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। आपको। जी, ये जो मैपिंग में जो आप करते हैं कोरिलेशन 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये टोटल डिपार्टमेंट का कंसर्न है। सीओज एंड पीओज केवल डिपार्टमेंट बनाता है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम का पीओ लेवल क्या है, पीओज क्या है, 12 हैं कि 10 हैं, क्या है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और सीओज को कैसे मैप करेंगे ये आप बताएंगे हमें, ये हम नहीं बताएंगे आपको, ये आप बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि अगर मैपिंग लेवल आपने सीओ लेवल कोई हाई रखा है और असेसमेंट लेवल लो कर दिया तो मॉडरेट करने की जरूरत है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कई बार क्या होता है, आपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, मान लीजिए 10,000 बच्चे बैठे और अगर 8,000 बच्चे फेल हो गए तो आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे? बोले 10,000 में से 6,000 7,000 बच्चे फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, तो क्या आप सब कर लेंगे एक्सेप्ट? यू विल नॉट एक्सेप्ट। समझे? उसका उसका मुझे बताना तो नहीं चाहिए कि छोड़ो। मैं यूनिवर्सिटी में था तब हम लोगों ने कुछ कोर्सेज के रिजल्ट मॉडरेट किए थे। हमने ये मॉडरेट इस तरह से किए थे कि लेवल ऑफ डिलीवरी लो थी और लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई था, तो नेचुरली ज़्यादा बच्चे फेल होंगे, तो ज़्यादा बच्चे फेल होंगे तो उसकी टेक्निक रहती है मॉडरेशन की, तो आप मॉडरेट करिए आप उसको। हाँ, अब आप क्वेश्चन कंटिन्यू करिए प्लीज। जी सर, काफी चीजें सर आपने वो बातें कह दी हैं जो शायद मेरा कंफ्यूजन थी, बट फिर भी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ सर। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। तो मेरा सर कहना ये था, जैसे लॉजिकली आपने जिस बात को यहाँ पे पुट किया था, इसमें 3 जो हाईएस्ट कोरिलेटेड होगा उसको रखेंगे, बट जब मैं ये कोरिलेशन मैपिंग कर रहा हूँ तो सर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 होना चाहिए, बट मैंने उसको 2 करके और आगे फ्लो कर दिया और विद रीजंस फ्लो कर दिया उसको मैंने आगे। तो क्या ये प्रोसेस ठीक है या इस प्रोसेस को मुझे और थोड़ा रिव्यू करना चाहिए? नहीं, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि एक बच्चे को मान लीजिए 40 नंबर में पास होता है बच्चा, और एक बच्चे को आप 39 देते हो। समझे? यूनिवर्सिटी कह रही है कि मॉडरेट कर लो भैया, 40 कर दो, एचओडी कह रहा है, डायरेक्टर कर रहा है, आपने कहा नहीं साहब 39 दे दिए तो दे दिए, तो ये ठीक है? आप बताइए, ये ठीक है? So therefore assessment is also relative। समझे? जब भी आप असेसमेंट करते हैं तो अपने दिमाग में कुछ बेंचमार्क सेटअप कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल बताए थे कि जो क्वेश्चन गलत तरीके से पूछे गए थे इसलिए आंसर उनके फनी थे लेकिन जो इंटरव्यूअर था उसने एक्सेप्ट किया, ऐसे एक्सेप्ट किया तो वो आईएएस में सेलेक्ट हुए, और नहीं एक्सेप्ट किया तो नील बोर बन गए, उनको फिजिक्स में फेल कर दिया गया।
यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में। क्या नील बोर को आज आप अगर फिजिक्स के एग्जाम में फेल करने की हिम्मत कर सकते हैं? आज आप फेल कर सकते हैं? जिसने लिया है नोबेल प्राइज फिजिक्स में, अकेला डेनिश है जिसका नोबेल प्राइज मिला है, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार हम टीचर्स भी अपने सवाल ऐसे फ्रेम करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं सवाल फ्रेम, अब वो बच्चा आंसर करता है। अब उसको कई बार हम लोग टीचर देखते हैं कि 1 पेज का सवाल आंसर दिया कि 2 पेज का है कि 3 पेज का, और उसके ऊपर बेस करते हैं अपने नंबर, मार्क्स दे देते हैं। 1 पेज का तो 3 नंबर, 2 पेज का तो 5 नंबर, और 3 पेज का तो 8 नंबर दे देते हैं उसको। करते हैं नहीं करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ। जी बिल्कुल। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं, एक एक चीज नहीं देखते हैं, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि मेरा असेसमेंट बिल्कुल सही है? हमारा असेसमेंट पूरा ठीक नहीं है। इसीलिए वी आर मूविंग फ्रॉम मार्क्स बेस्ड टू ग्रेड बेस्ड। ग्रेड में क्या है कि बैंड बड़ी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप बैंड में 6 बैंड बनाओ, फर्स्ट बैंड में टॉप बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ, सिक्स, और 100 लड़कों को 6 बैंड में बांट दो। तो दिस इज इजियर कि ये लड़का एक्सीलेंट है, ये लड़का वेरी गुड है, ये लड़का गुड है, ये लड़का सेटिस्फैक्ट्री है, ये तो हम कह सकते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़का वेरी गुड 1 है, ये वेरी गुड 2 है। अरे वेरी गुड पूरा वेरी गुड है तो एक ग्रुप बना लो। सो देयरफॉर सीओपीओ मैपिंग में असेसमेंट जो हम टीचर्स क्या है दिमाग में होता है, इवैल्यूएशन या असेसमेंट, वो बड़ा फॉल्टी है। And therefore we have to unlearn and then relearn. पहले हमको अनलर्न करना पड़ेगा और उसके बाद हमको रीलर्न करना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा नई टेक्निक। ये हम करना नहीं चाहते। जो चीज हमने पहले सीख ली है, बस मच्छी का स्थानीय मच्छी का जुड़ गए उसके पीछे। Now I have got n number of examples, मैं आपको दे सकता हूँ, but that is time consuming। जैसे ही 5:45 हो मैं, अगर आप लोग चाहते हैं अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करिए, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे टाइम का कोई कमी नहीं है, मैं दे दूंगा। मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस करके मैं एक नया लेक्चर डिजाइन कर लूंगा। लेकिन प्लीज, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जाना चाहते होंगे, तो लेट देम गो, और उनको परमिट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। If you director साहब permits those who want to go to leave, then I am ready to answer all types of questions। तो मैं और प्रेजेंटेशन कर दूंगा अगर आप तैयार हैं। आप मुझे आधा घंटा दें, मैं और प्रेजेंटेशन करता हूँ असेसमेंट के ऊपर। देखिए ओके सर। नहीं अभी थोड़ा ओके के पहले 1 मिनट और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा। यू इंटरेक्टेड विद मी, दिस शोज दैट वी ऑल आर एकेडमिकली लाइव। तो मुझे ये पूछना है कि बहुत पहले व्हेन आई वाज इन ए यूनिवर्सिटी, देन माय टीचर्स यूज्ड टू से कि आई नो माय स्टूडेंट्स इन्स एंड आउट्स, अच्छी तरह से मालूम है कौन लड़का कैसा है। मैं लड़के की आंख में देख के बता सकता हूँ। तो उस समय तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लड़के की आंख में देख के बता सकता हूँ कि इसकी समझ में आया कि नहीं आया। खैर कुछ कुछ तो सही है, क्योंकि मैं भी क्लेम करता हूँ कि मैं लड़के के चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी में, बिकॉज आई वाज वाइस चांसलर, एक छोटा सा एक गेम कर लिया कि एक गेम खेलेंगे हम लोग सब। ठीक है, तो वो गेम क्या था कि इफ यू आर टेकिंग ए क्लास, जैसे मैं अगर सेकेंड ईयर की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, 60 बच्चे हैं, तो उन 60 बच्चों के नाम लिख लो, समझे। और इन बच्चों का एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है, तो नवंबर के आखिर में किस बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे वो लिख लो। आप लिख लो 100 में से एक के 80 आएंगे, एक के 40 आएंगे, 60 आएंगे, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप लिख लो या कोई रेंज लिख लो, जो कुछ भी आपको लिखना हो, जो आप एसेस करते हो कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स एंड सेमेस्टर में आने चाहिए।
वो लिख लीजिए और उस कागज को लिफाफे में बंद करके सील कर लो और मेरे पास लॉकर में रख दो। उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। जब बच्चों के मार्क्स खोले जाएंगे तो नंबर मिलेंगे, किसी के 48 हैं, किसी के 42 हैं, किसी के 54 हैं, किसी के 92 हैं। तो बच्चे के जो मार्क्स मिले हैं और आपने जो एंटीसिपेट किए हैं मार्क्स, उन दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो मैं फैकल्टी को 50,000 रुपए इनाम दूंगा, और अगर नहीं है तो ले जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ए सिंपल गेम। खेलना चाहो तो खेल लो, नहीं खेलना चाहो तो ना खेलो। इट इज ए गेम। इस गेम में आपको अपने क्लास के बच्चों का अपने सब्जेक्ट में, जबकि पेपर आप ही बनाते हैं, यूनिवर्सिटी में तो आप ही पेपर बनाते हैं ना, तो आप ही को पेपर बनाना है। तो किस बच्चे को क्या नंबर मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, जो मार्क्स मिलेंगे उसको मुझे दीजिए एक सील लिफाफे में, और जो एक्चुअल मार्क्स मिले उससे मैं कंपेयर करूंगा। और अगर उसका कोरिलेशन मैंने बनाया था एक सर्टेन लेवल से कम है, जो एरर है वो सर्टेन लेवल से कम है, then I announced a prize of 50,000 rupees to that faculty member and to all the faculty members, और मैनेजमेंट देगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने गेम खेल लिया, थैंक यू वेरी मच, जाइए बाहर। अब मैं फैकल्टी मेंबर से पूछना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज की जितनी फैकल्टी है क्या इस गेम को खेलने के लिए तैयार है? और उसका ये है कि वीसी साहब के पास लिफाफा रखा रहेगा, और अगर मान लीजिए मिसमैच बहुत ज्यादा है तो वीसी साहब क्या सोचेंगे, समझे? दुनिया क्या सोचेगी, इसके ऊपर पूरी जिंदगी निकल जाती है हम लोगों की, और हम लोग कोई नई चीज नहीं कर पाते हैं। दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या, जब स्टूडेंट थे तो क्लास में लड़कियां क्या सोचेंगी, इसलिए सवाल नहीं पूछ पाते थे। जब क्लास में टीचर आए तो उसके बाद लड़के भी यही सोचते हैं कि सर क्या सोचेंगे हम, और मान लो सवाल का जवाब हमें नहीं आता तो डांट देते हैं हम कि बेवकूफ कहीं के, ये सवाल भी नहीं मालूम, पड़ोस वाले से पूछ लेना, बता देगा तुमको। तो देयरफॉर वी आर शाई ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। हमको ऐसा होना चाहिए कि हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ने दें। एंड आई हैव अटेंडेड क्लासेस जिसमें एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ने देते थे टीचर को, और सवाल पे सवाल पूछा करते थे। तो हम लोग क्योंकि नेचुरली शाई हैं एक दूसरे से और एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस टाइप के गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, और इसलिए हम लोग सीओपीओ की एक्चुअल मैपिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम एनबीए और नेक के लिए जा रहे हैं, तो इसको कैसे सीख लें, कैसे कुकिंग होती है। बाय एनी मीन्स हु कैन कुक, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई अटेनमेंट लेवल। एक्चुअल अटेनमेंट को हम इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अटेनमेंट लेवल। हाँ, कोई और सवाल है सर? और सवाल है? एनी अदर क्वेश्चन? कैन आई sign out? No, sir. Sir, thank you for myself, Dr. Aryan Yadav, and again, lot of thanks to you for such presentation. Some of the queries raised by faculty members are also try to solve by you, but that is online mode, and to understanding the whole the scenario that is difficult for us. तो इन फ्यूचर एज यू सेड कि आप फ्यूचर में भी कभी आप हमारे लिए अवेलेबल होंगे तो जब भी ऑन दी, देखिए एक चीज याद तो रख लीजिए, समझे कि यस सर। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। तो हम ऑफ कोई कोर्स सर गुजरे इन फ्यूचर जब, ऑफलाइन मोड वी प्लान हाँ, आफ्टर द प्रायर नहीं approval of the नहीं director and our ऑफलाइन, management team. तो ऑफलाइन मोड फॉर द मैपिंग एक and the एक to how to find the नहीं attainment level because there ऑफलाइन is मोड नो, प्लीज प्लीज। आप समझ लीजिए, मेरी दिक्कतें समझिए
कि my children will not permit me to move out of Jaipur. समझे? तो ऑफलाइन मोड ओके में सर, मुझे तो दिक्कत है। जब तक ये जैसा कोरोना आपका पूरा परमिशन खत्म नहीं हो रहेगा जाता सर। है, नहीं बाकी जी जी ऑनलाइन तो तुम जितने करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत जी नहीं जी, है। तो बेसिकली और हम लोग डायरेक्टर फोकस से भी करेंगे परमिशन जी। लेने की जरूरत नहीं है, आपकी भी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कंसीडर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स सर, फॉर आई ओनली एंजॉय स्टेप बाय। टीचिंग। यस सर, तो मेरा फोकस वही रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आपकी हाँ सीओपीओ तो मैपिंग और उसके जो मैंने देखो, तो उस पे हमको। अगर आप यस देखें सर। तो हमने क्या किया, तो हमने ये पढ़ा कि लर्निंग के स्टेप्स क्या होते हैं, जी फिर सर। टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद असेसमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आउटकम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, और फिर उसके बाद आधे घंटे टाइम दिया हमने सीओपीओ में मैपिंग पे। तो अगर हमको 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा, देन वी विल बी एबल जी टू डू जी, जस्टिस सीओपीओ मैपिंग। ऑफ कोर्स सर, वी विल प्लान इन फ्यूचर वेरी सुन रिगार्डिंग मे टू बी ओनली ए मे बी स्पेसिफिक टॉपिक। हाँ तो उसको हम मे बी करेंगे सर, बिकॉज बट आपकी हमारे सैटरडेज फैकल्टी, हाँ नहीं फैकल्टी के बीच में भी एक डिफिकल्टीज होती है कि हाउ वी कैन रेट द सीओपीओ मैपिंग नहीं 1 2 3, और मैं हाउ यू कैन जस्टिफाई, मैं और बिकॉज आपकी मैं इसी के बेस। यस सर मैं प्लीज। अपनी सभी फैकल्टी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जी कोई भी सर। दिक्कत हो, ट्रीट मी एज वन ऑफ यू। जी सर। समझे कि मैंने 55 साल पढ़ाया है, तो मैंने भी तो ये सब झेले हैं ना, ये सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप कोर्स सर डांटता था, वीसी डांटता था, तो ये सब होता था, तो मैं समझता हूँ तुम्हारी जी जी दिक्कतें। और आप 1-to-1 जी अगर जी करना चाहें तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बट जी ओनली सैटरडेज जी जी। या बाकी वीक डेज में आफ्टरनून, बिकॉज आई एम स्टिल टेकिंग क्लास इन माई यूनिवर्सिटी, और मेरी क्लासेस चलती यस हैं सर। यूनिवर्सिटी में, तो दोपहर में तो मैं क्लास लेता हूँ, एंड आफ्टर थ्री हाँ, ओ ऑफ क्लॉक कोर्स, ऑफ कोर्स सर, 15 days बिफोर आई विल नहीं नहीं इंटीमेट यू हाँ रिगार्डिंग टू दिस। हाँ यस 10 to तो 15 आप days आई विल हाँ इंटीमेट यू तो सर। आप जब भी रखें तो सैटरडे जी सर। रखें और हाँ इवनिंग रखें, सैटरडे दैट रखें। विल ऑलवेज ओके सूट सर। माय कन्वीनियंस। ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू लॉट ऑफ थैंक यू सर, डॉक्टर थैंक यू साहब, सर। थैंक यू Thank डॉक्टर you. ओके सर, थैंक यू Thank you सर, very much. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक नाउ यू session is over, so thank you Thank you, to all, sir. और I also thank you to Thank you, sir. director sir and Dr. Professor BK Singh sir, and all Thank the you, sir. organizing team and all the participants. Thank you, all the faculty members. थैंक्स Thank you टू sir. द And now ऑर्गेनाइजर्स, Garima Singh, Thank you, sir. वंडरफुली thank you sir. ऑर्गेनाइज गर्मा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज Thank किया you, है, sir. Thank you, sir. Thank you sir. गुड ऑर्गेनाइज। Thank तो you आई sir. एम साइनिंग आउट। Thank you, Yes sir. sir. Yes. Oh sir, thank you sir. Good evening. Good evening sir. Good evening sir. गुड इवनिंग। Now Professor Garima Singh, please end the meeting program. Thank you very much, sir. You all Thank are you sir. Thank you. assist to please fill the feedback link to get an e-certificate. Please fill the feedback link. Sir, can I end the meeting now? Yes, हाँ शक्ति सर मीटिंग एंड कर दीजिए।